प्लेयर एज अ प्लेयर उसको कोच की तरह आई डोंट नो नाम तो क्या बात है. So yeah, we'll move on to this now. दिस इज द कॉम जिसके ऊपर कि इनको लगता है कि ये खेल सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से. सो ग्लोबल स्पोर्ट्स डेफिनेटली तैयार रहेगी इस पूरे गेम के लिए. बट देन अगेन जॉनी, ये जो लाइनअप है, ये जो 5 प्लेयर्स हैं, आई वुड वांट टू सी व्हाट दे एक्चुअली डू. आई मीन लेट्स जस्ट सी. ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए. देवी और सचिनो, फैंसी यूनाइटेड वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, जीतना ही इकलौती चीज है जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी. से पार्ट होने जा रहा है. अरे भाई तो ये लोग डायरेक्ट ठीक है. Okay. Diagonal walls are always good. I like this wall. It cuts them off here and here. Okay. So you will gain control to this area and potentially vision or pseudo control. Like they'll always be fearful that someone can creep in here. So this is good. Also makes them stick around mid. Like Killjoy और ये सब rotation में नहीं जा सकते because they have इस चीज का ट्यूब में आने का. Okay, mute audio. Okay. So they have इस चीज का फियर के ट्यूब से भी क्रिप इन कर सकते हैं. ठीक है, मिड के इधर से भी आ सकते हैं एंड जेन्युइनली मिड पे इधर कंट्रोल लेके बैठ सकते हैं. ठीक है. सो द वाइपर वॉल इज गुड. डोंट रियली ओके. चेंबर ऊपर है. ओके. वुमेन यहाँ पे आई थिंक से स्मोक करेगा. यहाँ वाला स्मोक करेगा. अच्छी. And Sova, KO both B I don't like. So if they wanted to gain information, the a better choice is going here. Sova को इधर भेज दो, right. Make chamber peek here on the back of his TP. इधर एक TP डालने बोलो चेंबर को और दूसरा TP में भी somewhere around या तो पीछे या somewhere इधर ऊपर डाल देगा, इधर ही डाल देगा. So he can peek here and then come to mid and protect them at mid, right? What do you think? Will VLT able to counter the playstyle? Yeah. No. And then you bring KO here. What KO can do is knife this area or knife this. Knife 410 basically. Okay. So KO can knife 410. Very basic. This is a very basic thing. So KO. I'm talking about a default. So basically knife 410. Sova snakes. I mean S है इसलिए मैंने उसको snakes बोला. ठीक है. तुम उसको कुछ और भी बुला सकते हो. आई थिंक सो नॉर्मल मैप में जो वो लग जाता है, पर मैं इसको स्नेक्स बुलाता हूँ. ठीक है. सोवा स्नेक्स और वहां से वो ड्रोन या रिकॉन कुछ भी नॉर्मल पीक ही करके रख सकता है गार्ड पुश गार्ड करने के लिए. इन्फो चाहिए तो ही कैन ऑब्वियसली ड्रोन. सोवा के साथ चेंबर बी लॉन्ग Godspeed, can you help me finding awards any recent? Okay, I will, Pranav. Thank you for subscribing, Pranav. अभी सब्सक्राइब किया तूने इतने दिन से देखते हुए? छे. Okay, and वाइपर वॉल इज डिसेंट. ये जो है वाइपर का सेम कॉपी पेस्ट ही रख लो. ठीक है. एंड ओमेन, व्हाट ओमेन कैन डू इज ओमेन कैन रादर गोइंग ए ओमेन कैन स्मोक boiler. Smoke boiler, maybe PP top of tubes, right? कोई बात नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ मैं. I appreciate every sub. If you guys want to sub, it's fine. If you guys don't want to, it's still fine. I'm not bothered. तो मजाक करते हैं. So this is, I feel, a more constructive
डिफॉल्ट ऑफ व्हाट दे हैव. ये लाइनअप मेरे को पसंद तो नहीं है, बट इट इफ यू हैव टू मेक डू विथ व्हाट फैंसी like are doing, I think this is a better default for fancy. No, you're so cute and humble. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. तो जेनिथ ने भी, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस. कितनी छोटे दोगे. And defensive setups, I guess it's good. Omen can one way here, right? अच्छा, डिफेंसिव को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा तुम लोग के समझने के लिए आगे जाके. whenever like और तुमको you have to watch it back. So इधर ये कर देता हूँ वन वे स्मोक, है ना. एंड सोवा शुरुआत में, पहले बात तो सोवा और ओमेन दोनों इधर, आई डोंट फील इट्स नेसेसरी. आई थिंक सोवा को मिड की तरफ रहना चाहिए शुरुआत में. इफ अगर ओमेन यहाँ खेल रहा है, ओमेन वन वे करके थोड़ा देख सकता है. आ गए फुल ग्रुप्स. डोंट आस्क गाइस, सबन लाइक, थैंक यू, माफ करो मैंने भी अभी ध्यान ठीक है गाइस, ठीक. एंड सोवा कैन रिकॉन हियर, विच इज़ अ वेरी बेसिक रिकॉन अगेन इफ यू नो. ठीक है. किलजॉय का ये सेटअप इज ओके. आई थिंक that is the mistake that they're doing. They're playing Killjoy either. I think honestly, pistol round mein, it's always better to have your Sage playing here. Sage playing mid. Killjoy का setup is now better अगर तुम उसको A खिलाओ. So Killjoy can play an A setup जो वो बाद में करने लगते हैं. I think full sense in a group. तने thanks man. क्या बोला तने ने. ये ले VCT को फाइनल का. क्या बात है तने. Yeah, there are more words. YouTube पे है. Okay, so what I feel is defense पे, I get this is like this is what they want to do, but if I am to make a default मतलब defense का, especially for pistol round, I try to gain info towards B और जेट को इधर इस बॉक्स के ऊपर खड़ा करा के मे बी मेक हिम पीक बी के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम वेट इस जगह पे. मिड पे आई टेक मोर ऑफ अ अथॉरिटेटिव कंट्रोल, राइट, विथ सेज एंड सोवा का ये रिकॉन के बाद लाइक सोवा एंड सेज कैन बोथ वॉच मिड. और ये अगर ये वॉल हो गया देन सोवा कैन लीव मिड एंड सेज कैन नाउ कम दिस एरिया. सेज कैन नाउ वॉच फ्रॉम हियर, राइट. एंड इधर किलजॉय का वेरी कोई भी बेसिक सेटअप डाल दो इधर जैसे डालना है. आई डोंट केयर अबाउट सेटअप राइट नाउ, बट डिफेंस में आई थिंक किलजॉय एट ए इज बेटर पिस्टल राउंड में, बिकॉज दे हैव नथिंग टू काउंटर उस चीज़ को. केओ है, बट केओ शुरुआत में मोस्टली लाइकली नाइफ यूज़ करेगा. अगर रश में यूज़ कर भी रहा है नाइफ तो किलजॉय को साइड में खेलने की ज़रूरत नहीं है. किलजॉय शुड प्ले समवेयर अराउंड आइदर हियर और समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, इधर से ये देखने के लिए. एंड फिर सोवा यहाँ से फॉल करके या तो बी की तरफ जाएगा, अगर बी पे स्पॉट हुआ सोवा वहाँ पे हेल्प करने जाएगा, बिकॉज दे आर गुड. नाउस एंड ब्लीड मैच एफएस इन ग्रुप डी, मैंने तो बोला ही था. एंड किलजॉय कैन वॉच दिस, सेज इज वॉचिंग दिस एंगल. ठीक है, सोवा इधर आ जाएगा. ठीक है, अगर आना रहा या तो सोवा इधर आएगा या सोवा इधर आएगा बैक ऑफ साइड टू हेल्प होम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे फाउंड आउट, है ना. वेरी सिंपल शिट. Okay, let's see what they do. Okay, so isn't using his recon early. I don't get why. Maybe they're expecting a fast push. Observer क्या कर रहे हैं. Sage and Jet कुछ info भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यहाँ पे basically. So gained nothing. अब Sova is rotating to mid वाला area. Killjoy is also pressing mid. Omen is alone at A without any information gained. Omen उस तरफ one way कर दिया. Okay. अच्छा, ट्यूब्स कर दिया. नाइस. Iskerosi takes advantage of this area after the second, yeah. उसके बाद
it's almost game over for them. But Eskerosi shouldn't advance further. This is my. Obviously, he goes for another kill. He doesn't. He shouldn't. Like, it's not necessary. And now they're obviously going A. इनको पता चल गया A जा रहे हैं. ठीक है, elevation तो है, but they are short in numbers. I don't think they can do much. Skills take a solo fight. Asarola tries, but I think in a 2v4 instead of elevation, they should go together. Yes, I can and Omen. To be honest, instead of giving them solo fights in a 2v4, you fight together. There is a better chance of you overturning that deficit. Any boom and NN prediction, DXN and वगैरह उसके वो भी करेंगे. पहले पूछा था कि does ping really matter that much और फिर ये failed attempt. Okay, good individual decision making by Rossi. Setup wise, it didn't make much sense because you see Sova. अगर हम अपने सोवा को देखें, सोवा को यहाँ पे कोई इन्फो नहीं मिलता. ए पे ना कोई इन्फो है, बस बी पे तुमको पता है कि उनका रिकॉन आया है. ठीक है, सो तुमको पता है बी पे प्रेजेंस है, उनको पता है मिड पे ये स्मोक आया तो मिड पे प्रेजेंस है, उनको पता है, उनको ए पे प्रेजेंस कुछ भी नहीं पता है, तो वो ए छोड़ के जाना वॉज नॉट द ऑप्टिमम डिसीजन अगर हम ओवरऑल व्यू में देखें. बिकॉज ग्लोबल को नहीं पता है कि ए पे कोई है या नहीं है. दे मे जस्ट बी प्लेइंग इन अ वेटरन पोजीशन. एसके रोसी डज वेल हियर, which is something I applaud. After the first round of bouts, though, उसने जो वापस पीक किया उसमें वो एडवांटेज जा सकता था और उनको बीक हो सकते थे. देखो मैं बताता हूँ कहाँ. ठीक है, ये हुआ, ये किया. ठीक है, हो गया, हो गया. अभी इधर इधर he is going back. What if the two players, instead of going A, what if they pressure him? And if they pressure him, दूर दूर तक दूर दूर तक उसके डिफेंस में कोई भी नहीं है ऐसी. सो दे बेसिकली गेन कंट्रोल इतना तक, बिकॉज जब तक एसके रोसी मरेगा और सेज साइट आएगी, दे वुड हैव गेन्ड कंट्रोल अप अंटिल हियर. तो उनको फालतू का कंट्रोल नहीं देना चाहिए हमको. सो आफ्टर द फर्स्ट 3 किल्स एसके रोसी ने डैश बैक किया आफ्टर द फोर्थ फाइट, वो सही है. एनी बूम इन प्रोडक्शन. पीआरएक्स और फैंसी का मैच देखने में मज़ा आएगा. पीआरएक्स अटैक में 5 सेकंड में साइड पहुंचे, फैंसी 5 सेकंड में अटैकर्स 1 पहुंचे. दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे. प्रोफेशनल प्लेयर विद न्यू ऑर्ग कमिंग विच वी लर्नड अबाउट फ्रॉम अ लीक्ड व्हाट्सएप मैसेज. कैसा है भाई, क्या बात है, कुछ नहीं. तो विच इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस डिसीजन पर्टिकुलरली फ्रॉम एसके रॉसी. See, what if he dies here? He just gives them control. What if they were pushing B instead? So that is also a question. इधर इसके बाद I think rotation is very good. And Fancy United make a mistake in the fact that they're going for solo fights instead of going together. If they went together, they had a better chance of overturning the deficit. पर वो नहीं किया. Guilty group I feel is the toughest. देखते हैं हम, देखते हैं. Okay, let's look at. भाई रिप्लेस दिखाते हैं, सेटअप्स नहीं दिखाते हैं यार हमारे लिए. गॉडस्पीड दा, गॉडस्पीड दा. हेलो आयान क्यों दा. अरे यार स्कैम करने तो मुझे इन्फो लीक हो जाएगा स्किन से. नो वे ग्रुप्स इज टफेस्ट. क्या लगता है अभी वीएलडी के चांसेस? चांसेस हैं भाई, चांसेस. ओके, अगेन सेम वॉल. दे आर गोइंग फॉर एन इको. ओके, if I am Fancy, I don't think I go for an execute or something. I use this round to basically gain control and take both orbs. Maybe अपने सोवा को orbs दिलाऊं, ठीक है, या अपने केओ को orbs दिलाऊं. सोवा या केओ को orbs दिलाऊं मैं. वाइपर को दिला सकते हैं, बट आई फील सोवा और केओ के orbs ज़्यादा ज़रूरी है since they don't have a primary duelist sort of. Full frustrated Godspeed. What happened to your hair? क्या हो गया यार? लो, ग्रुप्स आ गए. हाँ भाई देख रहे हैं हम, पहले वॉर्ड रिव्यू कर लें फिर हम देखेंगे. ठीक है, तो आई फील दैट इज ऑप्टिमम. सोवा या केओ का इनको अल्ट चाहिए. ठीक है, प्रेफरेबली आई वुड गो फॉर एन केओ अल्ट बिकॉज केओ गिव्स देम लेट्स से एज मच ऑफ कंट्रोल एज अ प्राइमरी डुएलिस्ट impetus would with his ult. You can gain as much ground with a KO ult as much as you would have gained with, let's say, uh, like primary duelist pushing.
So this is good. We go here. I didn't, okay, ये मैंने मैच में बोला था, I didn't like SK Rossi's solo position here because there is no escape mechanism for him. खासकर नए Icebox में, right? Because नए Icebox में people are coming from here and here. So there is no escape mechanism for SK Rossi here. So this was, I feel, a wrong call position wise. Then Golu outplays them. Now see what happens here. By this wall, Golu locks this. So up they cannot go here, so they have to move around and go here or break this, right? And Golu has himself elevated sub dash. खेला हॉबे हो गया मेरे साथ क्या हो गया VLT तो गई you won't private the stream now because I need to watch this offline no I won't private so what happens here is either they can go this is one option yeah this is not looking मतलब crisp so either this is one option because icebox है ना तो blue नहीं होगा this is the second option that they break it ठीक है so Golu himself and the lovely thing about this wall is Golu elevates himself on that box अब वहां से he can take a better fight right and he has evasion he has the cover of the box so see what happens here let's see he can take fights and disengage always it is always preferable for you to have a disengaging option while taking a fight no matter how favorable it is always have a disengaging option if you have a disengaging option it's all the your fight is automatically better worst case scenario you can just fall back or like disengage and wait for rotation okay this is something they missed again on any other day see I think this was very irresponsible from Appa to keep running here because you have to understand that anybody coming from mid will already take control of this part of tubes और जो killjoy का ये turret है it will only spot people if they arrive in this area so he can't irresponsibly run like this so this is sort of थोड़ा सा irresponsible from him because on any other day he hits like BMV hits this kill and then Global probably go on to lose this round. Kappa though converts that very good and now it's back to a 2v2. They have control, they have vision and like Fancy was able to do all this just because of Rossi's poor position here. To be honest. Because in the new icebox that position is suicide. You never take that position. Very good like Kappa is just ADing and trying to gain some info so that they can react to incident. Hellranger is watching whether they fall back or not. Now Kappa knows that they are inside. They have side control. Planting. Hellranger comes. Hellranger tries the flash. Hellranger and Kappa both arrive side. Viper and Sova have fallen back. This is where what do you do? Right? Because Hellranger has TP, Hellranger has smokes. So he goes for let's say he himself smokes this angle off. Whereas if you see Kappa is going for aggression. Exactly what you need to do. Always keep the high ground, rule 2 Fortnite, always stay near cover. Exactly, Tanay. Like I see. So these are things that are there in other games. Now, Hellranger here gets morbidly lucky in the fact that yes, I can peaks. On any other day, yes, I can just play around these angles. But that is good. That is a 1v1. You can't judge 1v1. वो सब heat of the moment में होता है. Let's not talk about it. Okay. Hellranger converts this round. Very important round. क्या हो गया लैग थोड़ी ना हो रहा है भाई हेलो वापस लैग हो रहा है क्या प्रणव ये इमोजी मत डालो भाई मेरे को डर लग जाता है लैग हो रहा है क्या फिर से ये ड्रॉप फ्रेम 0 है भाई शर्म कर लो तुम लोग डरा रहे हो मेरे को
शर्म करो, करो, शर्म करो, शर्म करो. No. Okay. Let's look at the setup. Okay, this time they're going for a fast. Now, this is a full buy round for fancy. You have to remember they'll go for this wall. Okay, and look at the setup. Okay, I prefer this setup. Omen can watch these angles and Killjoy has a passive. But for me, the problem is then Omen has no cover. Then he should not be playing here. He should not be playing here and Killjoy is playing here because then it makes no sense. No lag, joking, please don't cancel me. बुरे में शर्म तो वालों खेल के बेच खाई. सही बात है आयुष. I scare you. No, thank you guys for the response. So the thing is, you can have this setup, but that is like a second option for you. If you want to play aggressive, then your killjoy should also play aggressive. But if you want to play like if your killjoy is playing aggressive, then it's better to have an aggressive setup, right? Hi, what? So what I would prefer here that if killjoy has to set up all these things, he maybe puts turret और ये सब के वजह से killjoy has to play थोड़ा पीछे. So what I would prefer is you smoke off this area, right? And you play from somewhere on top of this box instead. Top of this box, you have the vision. If someone tries to go, maybe not smoke this, maybe smoke this, right? So maybe smoke this, so this angle is covered. You have vision of this area. Play on top of this box, so you can disengage better. और इधर box के पीछे cover भी मिल सकता है if someone tries to peek you. So that is a better option if your killjoy is playing B. If you want to play 2B, right? Instead of playing ultra attacking like Omen has, because then Omen has nowhere to go. Sometimes, if they actually come fast, imagine कि अरे भाई हाँ. Imagine KO knifing here. Now Omen has knifing somewhere around here from this area. Now Omen has nowhere to go. So better for Omen to be somewhere around here. And smoke this off. Instead of this, you smoke this off. You smoke one angle off, the second angle you can see. And as soon as you take like some contact, on contact you fall back. You alert your teammates. Then maybe you watch this crossing. उसके बाद yeah. Smoky. Okay, so this was well played by Acerola. Look at his first TP. He immediately closes the gap. Look at his second TP. Okay, everyone look at his second TP. Immediately closes the gap. They don't realize. Now Acerola flashes, catches Sage off guard. Even though he dies, he's done so much. Sage का wall तोड़ दिया. Now they have little time to respond. They are sort of desperate. Surely VLT SB twice, not twice maybe. Yeah, VLT can defeat SB. Let's see though. So they don't have a little time. They are scattered. They have no time to respond because Sova is already here. Viper is above this, and KO is following them. So yeah, not ideal. यार एक तो ये see Sova immediately इधर ला. Kappa tries to take this peak, which is not good again. Long range में Spectre लेके कोई फायदा नहीं है. You should have just fallen back of side जहाँ पे Sage और Sova दोनों साथ में से वो Sage को कवर कर सकता था. I mean Sage को बोल रहा हूँ, Jet को कवर कर सकता था. See, they both take individual fights. Nice. I can see the logic that maybe while he's engaging, so while Kappa is engaging Sova from here, SK Rossi can peek from here and take Sova down. I get it, but there is more risk involved here than when playing both
एंड द सेम द गुड ओल्ड हम सोच नहीं सकते तो ओपोनेंट्स को भी सोचने नहीं दें. Now Skilljoy is rotating. Omen is so far off. See, another con of this when you're playing here is that your rotations are very long. If you're playing somewhere around here, the rotation is much faster. Like 3 seconds faster, I think. At least. I'm lost open ऐसे Valorant scene ऐसा कोई बात नहीं है. Icebox KO is yeah. Icebox KO. Icebox KO is very good, especially the lineups that I've come up with. क्या ही बोलूं किलो. The lineups that we've come up with, Icebox KO is S tier. See, this is good. Fancy fall back. While falling back, Viper is giving them cover. ऊपर से they're watching this angle, so nobody can peek and kill them, which is good. Because otherwise they're running. पीठ दिखा के भाग रहे हैं. भाई कोई कर दो भाई तने. Please time out. Now they're mostly going for the save. Helen just smokes it off. Nice. It's also a one-way smoke, I think. Yeah. I wish I wasn't told ज़्यादा impact नहीं है रे. I don't know who said this, but that's really a dumb take. Whoever said this, very dumb take. Isos KO has massive impact, especially in the current meta, which will now bring breach. PC दूसरे टैब पे गया तभी damn. It's okay. So they have two weapons, right? They save an op, they save a rifle, they give a Rossi the op. Now they understand. They've seen one round of fancy. Some bad people told me that. Damn. KO is good on every map as a counter agent, but on maps like Haven and now Icebox, he is just good because there are so many possibilities. So you can eliminate certain possibilities through KO knife. When KO is working then, yeah. Because Heaven 3 sides, right? And Icebox so many like such an open map, even Breeze. So these three maps, KO is particularly better just because it helps in eliminating certain possibilities through the KO knife and everything. I hope you got. Ha, I understand. Didn't expect that though. Okay, full again. Omen doing the same thing, using his TPs to quickly cover up space so that anyone who comes who comes aggressively, is punished. Omen takes control. Omen smokes. They also smoke, so those smokes हो गया. They okay. G read this well. G read this well. They rotated already. Hoping they do this damage and apex. Other expectation. So now Iskeros is watching with his orb. Killjoy has come towards the mid area. He's watching mid. Omen is back off side. They are well prepared for fancy here. They've smoked this area off. और पीछे से Eskeros is just watching this angle. Okay, the attacker smoked this off. Now they're falling back again. Omen should hear the sound. Omen should give the cue. Omen, कुछ बोलो. ओमिन या कोई भी कुछ बोलो बिकॉज उसको यहाँ से यहाँ का आवाज आया होगा. He says worst part of KO knife unbreakable in many spots. Yeah, what do you think about fancy to control a good or overkill? Yeah, it's good. It's good. I think the hi Nishant, thank you for subscribing. So आ रहा है वो टाइम आ रहा है when you see double controller double initiator meta very soon. Okay. Yeah, true. Turn. Okay. Golu is well prepared. Golu and Kappa, absolute heroes of this round.
they deterred this because see, Fancy is already desperate. Yeah, we know Arikan. We're just doing the VOD review. We do the first half and then we go to the groups. Okay, so Kappa and Golu absolute heroes for this round because you see, Fancy United are desperate. They're falling back. They have just 30 seconds, right? 30 seconds is a lot though, but some people sentence lower forever forgotten. Thank you for subscribing, Tanesh. Okay, so let's move on. So what Kappa does here, uses a shorty to the optimum level. वो मर भी गया, कोई problem नहीं. He has actually derailed the momentum of Fancy's push. And पीछे they already know, so they're already aware कि Golu is here because Golu has killed one of them. So now, obviously they have XG Dhanesh. Hi Dhanesh. Yeah. So now look at what Fancy do. They pick up the spike. पीछे ये, this is bad. This shows desperation. Okay. You don't need to smoke. You don't need to molly here. This shows desperation. Group C is scary. ऐसे भी scary था B और C. So this shows desperation because you can just spam it off. Right? अगर तुमको कुछ clear करना था तो maybe clear this angle जो कि already पिछले ओमेन ने कर लिया था. So you don't need to clear this angle, right? Or then you either use it इस तरफ थोड़ा जहाँ पे they cannot push you. ठीक है? Or the optimum use is this area. ये एरिया पे जहाँ पे यू कट ऑफ द रोटेशन, या तो इधर या इधर कोई एक जगह पे वे दे कट ऑफ रोटेशन. फुल सेंस इन ग्रुप प्रोफेशनल प्लेयर भाई. ओके, सो एसके रॉसी वो नाउ द थ्री प्लेयर्स आर भाई. ये ऑब्जर्व क्या हो रहा था, आई डोंट नो. एस सी दे हैवंट बीन प्लांटेड एंड they are pinching him. And he can't even come off the plant because 14-19 seconds left. Agar abhi they'll try to fight, it may end in something unfortunate. Plants, tab tak SK Rossi gets, this is the important kill. So basically he gets this is all fine, right? This is all fine. The next one is an important kill because right now if you actually look, it's a 2v3, right? It's a 2v3, and but this is a pure 1v1, right? The third player is very far away. Albro upset हो गया. Snakes beat Enigma weapon. Good for Enigma. I mean, good for Snakes. Yeah. Onyx the most unluckiest team in APAC. Damn. Group C में गए ना Onyx, I think. Okay. So if Rossi loses this, not only is it now a 2v2, but it's essentially a 1v2 because the Omen is so far away. So it's essentially going to be skills versus 2 if Rossi loses this duel, which he doesn't. So and by that time Hellraiser comes back, so it's now 1v3, and this flash is good even though it flashes skills. This flash is good. What is Hellranger doing on B this round? मैंने तो बोला ही, Hellranger रोटेशन करके गया था ना B पे. बर्फ जम गया. यहाँ तक सब ठीक था. I think that's a necessary kilo because if you remove teammate flash, then you can set up so many things with Omen. That makes it very overpowered. Okay, पहले ग्रुप्स देख लेते हैं. चलो भाई. Okay, तो पहला ग्रुप is Boom Esports versus No Namers. I think so. Boom
Boom is good here. Made in Thailand, Cerberus made in Thailand. Made in Thailand, Boom will be very interesting matchup. Cerberus versus No Namers. No Namers win. No Namers come here. No Namers versus जिसका भी होगा. It'll be interesting. So Group A is interesting. Group A is not hard now. Group A might just be the easiest. Group A is the easiest now. करो ना वुमेन को. नहीं और बार नहीं चाहिए. Okay. Coming to Paper X versus Fancy. Paper X was obliterate Fancy mostly. Bonkers is okay. This is the match to watch अभी तक. This is a match to watch. Write it down if you want to. Mark it. This is the match to watch अभी तक जितने भी ये matches. This is the match to watch. ठीक है. Zorgia versus Onyx, another match to watch. But just purely because like Group C में तो सारे match to watch है ना. Southbit Full Sense, another match to watch. Kim Crow. पिकम बाद में करके डालेंगे. पिकम लास्ट में करेंगे. नलिंजन. मुंबई सर्विस लैगिंग सो मच ऑलवेज 2 गेम होता है 2 प्लेस और डीसी इन बोथ डैम. जो मोमेंट के साइड पे खड़े होते हैं मोमेंट क्लैशेस समटाइम्स इवन यू गेट प्लस. हाँ तो वो होना ही चाहिए. थैंक यू वॉट. वुमेन एल्स एक्सपेंस विद ब्लाइंडिंग एंड डेफनिंग इफेक्ट. क्या बात है. जो अपित खेलेगा. हाँ अपित एंड मैक्सी. So there are 4 matches to watch. Group B का Bonkers versus Persia. इंडियन टीम को छोड़ के बोल रहा हूँ. इंडियन टीम का तो मैच टू वॉच है ही. अब लोग देखेंगे ही. इंडियन टीम को छोड़िए. देयर आर 4 मैचेस टू वॉच. ग्रुप सी का दोनों मैच एंड ग्रुप डी का पहला मैच. अदरक. मम्मा लस्सी में अदरक आ गया मुंह में. पता नहीं अभी थूका अदरक था पूरा. क्या क्या पीसी थी इसके पहले. अदरक कैसे आएगा. I still think there is a chance. सीधा ₹1,00,000 पगार जीजे भाई. ब्लीड का प्लेइंग 5 आई थिंक सो इट्स मैक्सी. I'll tell you guys. यार अदरक आ गया लहसुन बताओ क्या करें. मेरी बेटा लहसुन रोक रखे मे भी. मिक्सी में नहीं बनाए क्या. नीचे चीनी बहुत रह गया. अच्छा. हाँ उसी में हो सकता है. उस दही का एक मोटा वो था. मतलब होता है ना जैसे मलाई जैसा आता है जो दही का. उसके साथ था वो अदरक इसमें. हाँ. चलो लेट्स रिटर्न टू दिस. नाउ अगेन वाइपर हैज डन दिस वॉल. ये वॉल किया तो उनको याद है कि ये जब भी वॉल कर रहे थे वो लोग बी की तरफ थोड़ा प्रेजेंस दिखा रहे थे और मिड की तरफ प्रेजेंस था. फेस इज बीटेबल. अगर हो गया काम तो वी गुची. यस
लेट अस सी दिस सेटअप. ड्रोन आया, ठीक है. ड्रोन से अटैक. अगेन दिस पोजीशन इज वेरी वन एंड डन. आई डोंट लाइक दिस पोजीशन. मैंने पहले भी बोला this is a very bad position for SK Rossi. I don't know why they were making him take this position. Yeah, he was taking this position. Both ways, not good. अब उसकी वजह से क्या है? Obviously, गोलू को यहाँ पे सप्रेस करता तो he has to fall back. He doesn't have anything. नहीं तो वो वापस से ये वॉल करता. I think so. Mango Lassi to mainstream. If you beat FS, I give him my entire next month salary as Amazon gift cards. Nice. तेरे को मार दिया. हाँ. चौंक गए हम. So देखो कितना एरिया देव गिवन अप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. इससे अच्छा आई रिपीटेडली से इसके तो या तो इधर खेलो या इधर खेलो, ठीक है, या आइस बॉक्स के ऊपर खेलो. देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस यू कैन प्ले नाउ. मे बी यूज द सेज वॉल पहले से और उसके ऊपर ऐसे खेलो, है ना. नॉट ऑफिशिएंट बट डेफिनेटली बेटर देन व्हाट एसके रोसी इज डूइंग राइट नाउ. 2 राउंड मैंने देख लिया. दोनों राउंड उसकी वजह से ग्लोबल गिव अप अ लॉट ऑफ कंट्रोल. फैंसी का ये चीज मेरे को पसंद आया आफ्टर दिस बिकॉज दे हैड नो सेज, ठीक है, एंड दे ऑलरेडी यूज द वाइपर वॉल देयर. दे वर वेरी स्लो इन ऑल ऑफ दिस. हाँ हाँ मेरे को पता है, मैंने देखा. अभी नहीं, अभी तो सेकंड मैप चल रहा है. फर्स्ट मैप दे लॉस्ट ना वर्ल्ड गेम स्टार्स से. सी नाउ देर पुशिंग वाइपर के स्मोक को करके एंड यूजिंग. ओके थोड़ा पीछे जाता हूँ, तुम लोग को दिखाता हूँ क्या हुआ एक्चुअली. ओके वाइपर ने यहाँ पे स्मोक किया. ऊपर दोनों ओमेन के स्मोक्स आते हैं. देव एब्सोल्युटली कवर्ड पूरा विजन. सो ये पूरा विजन ब्लॉक्ड है. यहाँ वाले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. दे आइदर हैव टू पुश इन. एट दैट मोमेंट दे आर गोइंग इनटू द फॉग ऑफ वॉर बिकॉज उनको कुछ विजन नहीं है. उनको पता नहीं कौन से प्लेस कहाँ खड़े हो सकते हैं ये सब जगह पे, है ना. सो दिस इज गुड फ्रॉम वैंसी. दे वेटेड फॉर बोथ ओमेन स्मोक्स टू कम बैक, rejuvenate, और फिर उसके बाद they actually apply this. This is good. This is a very good adjustment from Fancy United. और ये जो plant है, this is obviously the better plant अब, ठीक है. And skills tries to take advantage, denies the plant, tries to take advantage of on the back of Kappa's ult, which is good. First month का कम था. वो तने ऐसे जोक मारता है भाई. It's good. Very good, very good. I like this. He has taken snowman control. Very good, yeah. This is very good. This is possibly shows you that Fancy United are not just like a dumb team with just aim or something. They absolutely adjusted well. Whoever their IGL is, he adjusted well. मुझे तेरा सैलरी थोड़ी पता है, मैं गॉड स्पीड थोड़ी हूँ. क्या बात है. Good round from Fancy. But it's okay. I mean, SK Rossi is his ult. Kappa doesn't have much. ठीक है. But SK Rossi has his ult, सब कुछ है. Is Kappa I think so drop for someone? क्या हुआ? हमको देख सकते हैं. Kappa bought a drone I think. Kappa buys a drone and full armor. Okay. Interesting. I think the Kappa dropped for someone. No? No. Golu has. Okay, so SK Rossi drops for Golu. Okay. Okay. So
investing in armor, and then yeah, so Hellranger goes on half armor and gives Kappa the bulldog. Lol. Kilo. Again, setup. They're going for. So अभी समझ जाना चाहिए जो पहला राउंड में हुआ. They're going for a fast A execute. Omen यहाँ पे अकेला है. Sova comes. Did Sova use his recon? No. Yeah, Sova already used his recon. Kappa. So now Omen is stranded. He'll go back of side, which is a good option. Sage comes to help him ऊपर से. So अब इधर आ गया. This is bad. 3 जन cramped in such a small area back of side. This is bad, especially against a Viper Omen setup जहाँ पे Viper ने पूरा चैनल बंद कर दिया है. Omen with this smoke यहाँ पे तुम्हारा vision बंद कर दिया है. You have nowhere, like you have no inkling. This is like you. This is the same matchbox thing. Basically, you're digging your own grave with all this. Which is the Rossi playing the like a quasi chamber, not being aggressive like it is. Mohan Lena, yeah, I don't know about that. Again, good flash. He whiffs. Acerola whiffs. Gives Hellranger a chance in back. Now here Hellranger should just not peek. Should just wait for SK Rossi to arrive, which he does. Nice. A bunch of trades happen पीछे. So Rossi is going for peaks. So 1v2. He's trying to fall back. अभी इधर since he fought तो उसको समझ जाना चाहिए इसका क्योंकि तो other guy is detained है ना. I don't know what he does here. I didn't even understand what he does here. What does he think? Where is the other guy? So because he's seen, who has he seen? So who doesn't notice here? He notices KJ here, right? Fair enough. Notices KJ. He knows KO was side. He hears KO fall back side, fall back from side. So he should expect KO to be here. If he didn't hear KO and he is detained, so वो आसपास ही होना चाहिए. Why is he looking towards side as if he didn't hear KO come from there to here? It was okay. He should have looked at side. अगर ऐसा होता कि KO ने कोई साउंड ही नहीं दिया, KO इधर बैठा हुआ था ना, KO साइड में घुसा था, इसको पता है. और अगर KO ने कोई साउंड नहीं दिया होता फॉल बैक होने का तो चलता. बट ही हैज गिवन यू द साउंड. ही हैज गिवन यू द साउंड. क्यों तुमको एक्सपेक्ट करना चाहिए. सो अगेन दिस इज द थर्ड राउंड वेयर आई एम sort of not really don't really understand what SRS is doing. First two round, मतलब second round and fourth round में it was more about what setup he was deploying. Second round and fifth round I think. Yeah. This round में it is like this is a round he should convert. Yeah, exactly kilo. वही तो बोल रहा हूँ. वही. Okay, again this Viper wall. This was the default. I told you I don't think this default was good. I told you guys a better default here for the fancy guys. Let's see. So now I think so. अभी they're not adjusting. Global are playing their pistol round वाले default जो मैंने जिसका alternative बताया था. Rossi throwing over Jatin script. No, not throwing. These are micro decisions. Exactly, uncle. Okay, Killjoy places this turret. Very good. Hellranger tries an aggressive peek on the back of Sovaka Recon. Thinks no one is there because he's hiding. Acerola takes advantage. Acerola kills him. Now because they know कि Acerola is here, पहले राउंड की तरह now Rossi's quickly because उनको याद है पहले राउंड में they went A और यही सेटअप था. They should remember कि ऐसे ही ये वॉल आया था. Okay, but the problem is इस बार B पे कुछ नहीं है. पिछली बार B पे एटलीस्ट रिकॉन आया था. Burn playing Omen like a jet. Rooster said he didn't like G's comp without Viper. हाँ, so I am also not liking the first match का comp. Griffin comp was better than this.
look at the patience Fancy is deploying because they know now कि उनके पास पैसा नहीं है, so they're expecting pushes. G's skills give them what I don't like no Viper either. I think you can play without Viper, but then you have to have such agents. I think without Viper you need a breach and green gun, but it's okay. We don't talk about that. This is a good push. Even though it doesn't yield anything, Golu had picked up a good timing. Match चल रहा. नहीं, I'm just doing a VOD review, Sharky. Welcome. Now they converge. Although I don't like Omen. I don't like what Omen does here. He should wait for his team because he now knows that they are on an eco. Eco में you have to remember the you now it's all about economy because 5v2 you are expected to convert the round, right? 5v2 expected to convert. Now it's all about like conserving your economy. So Omen shouldn't go alone, but वो आसरोला है, वो पागल है. मैंने बोला ही आसरोला और पिक्सल्स देख लो तुम. आसरोला पूरा पिक्सल्स है. पिक्सल्स आसरोला है बेसिकली हमारा इधर का इंडिया में. Falling back, इसके Rossi gets something. इसके Rossi has to fall back. Recon आता है. Now they are converging together, which is good, but again they tried to separate. Okay, elevation, good elevation. वो फिर वो फ्रैगमेंट कहाँ उड़ के गिरा, नो आइडिया. साइड वाला एंगल उनको क्लियर करना था. आई गेट इट, बट रिकॉन से ऑलरेडी क्लियर हो गया था. नो, बट जी गॉट 11 राउंड्स अगेंस्ट फैंसी, ओनली 8 अगेंस्ट पीपल. देखो दिस कॉम्प इज बेटर. हाँ, उस लॉजिक से बेटर है. बस क्या कर रहे हो सर के बताओ. कप्पा ब्यूटीफुल टाइमिंग. इट्स ओके. They gave decent damage. Golu might have gotten the kill. Deep वाला शार्की आते ही आरजी पिक्सल्स का एग्जाम दिया क्या. गूगल वाले भी ऐसे पर्सनल लाइन्स देते हैं. ये क्या मौलिया भाई. एग्जैक्टली क्यूट में सिर्फ डब्ल्यू की है. हाँ, इधर थोड़ा डीपर. एग्जैक्टली ना, वही बोल रहा हूँ. जरूरत नहीं. बोलता रहा हूँ फैंसी यूनाइटेड का सेटअप्स और ये सब वर फार फ्रॉम ऑप्टिमाइज्ड. उन्होंने एक राउंड बहुत अच्छा खेला जो मैंने दिखाया. उसके बाद उसके अलावा अभी तक कोई भी राउंड मेरे को अच्छा नहीं लगा. ठीक है, एक राउंड वो अच्छा लगा, मिड राउंड एडजस्टमेंट, जहाँ पे वो ओमेन के स्मोक्स को रिजनरेट होने का वेट करते हैं और वाइपर का स्मोक इधर यूज करके, ओमेन के दोनों स्मोक्स को इधर यूज करके ये पूरा एरिया का विजन काटते हैं. दिस इज द ओनली राउंड आई लाइक फ्रॉम देम टू बी ऑनेस्ट अभी तक. एग्जैक्टली. अभी तक 7 राउंड में से एक राउंड फैंसी ने अच्छा खेला है. आई डोंट हेट एनीवन जी, बट आई थिंक दे शुड ट्राई न्यू प्लेयर, मे बी इट वर्क्स. आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन देम. Pranav. Changes might just be necessary now after this performance, but yeah. Again, ये smoke, this is they have a better smoke here. और फिर वहां से TP यूज करके makes no sense. उतना आगे जाके not even taking contact ड्रोन के पीछे. इसीलिए I tell you, इसलिए I told you कि it is better to play इस बॉक्स के ऊपर and smoke off थोड़ा deeper. So smoke off थोड़ा सा deep here and play this box के ऊपर from this angle. Drone आता, you can break the drone as well. You can safely fall back. It is better for you any day. सारा साउंड क्यूज तुमको, जो साउंड क्यूज तुमको यहाँ से आ रहा है बी का, वो तुमको यहाँ पे भी आएगा बी का. ठीक है. So yeah. Chat does not ask about G to change the challenge. Impossible. Okay, Ranger, I mean setup not optimal. इसका reward तो मैं चाहिए Amazon gift card नहीं चलेगा. See, they're reading for this flash is something we found. इसका better flash version भी है. It's very broken. Okay, SK Rossi here, very brave. This is much like SK Rossi takes down Acerola. Now up they are also afraid of taking fights. उनका main पागल बंदा तो चला गया. ठीक है, it's secure अभी तक. Now this smoke is good. ये फ्लैश करके कंट्रोल वापस ले रहे हैं. इज बैड बिकॉज ही इज टेकिंग कंट्रोल वापस.
अकेले इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। अकेले वापस कंट्रोल तुम कैसे ले सकते हो? वीएलटी मस्ट बी क्वालिफाई करो, नोटेल वाला मेंशन दूंगा सबको, क्या बात है। चलो, that is bad. A better purpose would have been maybe smoke this channel off. Okay, and maybe SK Rossi and SK Rossi and Hellranger could both walk up to yellow and take back control. But I guess I know what the fear is. The fear is that someone is up, someone is here, which they are, but fear justified. The smoke is justified. Hellranger's subsequent play is not justified. This is absolutely bad. He can't take control alone. You're giving them a 1v1 fight at a 5v4 advantage. It just doesn't make sense. Ophelia, that didn't make any sense. What Hellranger? Exactly, Ophelia. Welcome. Probably one of the only times Rossi played like himself, going aggressive with his first picks and taking risks. How did the teams play from the planes into group stage? Was it random? G needs you as the coach? No, Jatin. G needs a coach. I don't know who coach, what coach, where coach, but G needs a coach. अबे तू जो मेंशन देगा उसके दो एक साइंस वाले मेंशन में अन्ना रहते हैं, वो खुद दे देंगे मास्टर्स क्वालिफाई। सही बात है, फरारीज गिफ्ट। टू बी ऑनेस्ट आई वुडंट बी सरप्राइज, फरारीज तो नहीं बट वुडंट बी सरप्राइज अगर वीपी का कोई वर्जन हो के जो एमवीपी बना उसको अन्ना गाड़ी दे दें तो, या सीए को दे देंगे और मेकिंग देम क्वालिफाई फॉर मास्टर्स। इमेजिन सीए फिर गाड़ी में बैठ के लाइव सेशन करेगा, मक बैंग करेंगे उसके गाड़ी में बैठ के। मतलब सीए हम लोग तीन ऐसे इधर घूमते रहेंगे। इसके Ross's angle is very good here. He misses the shot, but it's still very good. Again, very good Viper smoke. I've already said ये smoke better है अभी नए वाले में। Killer isolates Rossi. Rossi misses the shot. Skills trades. Plant हो गया है. It's a 3v3. Okay. Skills should wait for his teammates to arrive. Now Kappa has arrived. Skills and Kappa are at side. Golu wants to flank या नहीं? Golu also comes here. Honda City for CA. अमर तरसु को Ferrari. DM rolling in with that Lambo. अब थोड़े realistic cars guess करो। भाई मेरा favorite brand था Chevrolet. I don't know how many people of you know Chevrolet. Chevrolet Cruze was my favorite car. Not even lying. लोगों को Ferrari पसंद है, लोगों को Audi पसंद है, लोगों को ये सब पसंद है, Mercedes, BMW। मेरा favorite था Chevrolet Cruze। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना स्मूथ था। और टोयोटा कोरोला आया था, वो सब इतने स्मूथ चलते थे। शेवरले क्रूज भाई, शेवरले क्रूज उसके बजट में अपने बजट में लाइक 10 लाख का बजट में उससे अच्छा कार मैंने नहीं देखा। इंसेन, या एग्जैक्टली शेवरले क्रूज। Okay, misses the shot, 3v3. This was a good push from, to be honest, if you see how push, how skills is pushing the narrative and initiative, as like they are busy alting or also skills takes up so much space, even though he's taking a single duel अभी जरूरी है because see उनका 3v2 भी देखो, बता रहा हूँ, देखो यहाँ से दिखाते हैं। ड्रोन हो रहा है, ठीक है, अभी ये मिस करता है, इसको पता है ये यहाँ पे, ठीक है, वाइपर तोड़ता है, वाइपर को पता है यहाँ पे, अभी सोवा अल्ट कर रहा है, तो बेसिकली 3v3 की जगह ये 2v3 हो गया फैंसी के लिए, है ना। फैंसी के दो ही बंदे एक्टिव हैं, ये बंदा पैसिव हो गया, ये बंदा पैसिव हो गया, ही इज पुशिंग पी, है ना, ही इज पुशिंग पैसिव, ही इज पुशिंग इनटू पैसिव। नाइस, ठीक है, वो बस प्लान डिनाई कर रहा है, तो प्लान पे ये लोग बैठ नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूँ कि उसी का लॉजिक बता रहा हूँ। तो इट्स एसेंशियली अ 2v3, और उनको पता है कि दोनों यहाँ पे चेंबर स्पॉट हो चुका है, चेंबर के पास ऑप है, ऑप को पुश करना बेटर ही रहेगा, लॉन्ग रेंज नहीं फाइट्स ले सकते, और दूसरा वाइपर यहाँ पे है, तो दे नो कि ये दो जन यहाँ पे है, और ये बंदा अल्ट कर रहा है इस एंगल से, कहाँ से कर रहा है नहीं पता, पर ये इस किसी एंगल से कर रहा है, बिकॉज अल्ट का पाथ दिख रहा है, ठीक है। सो दे हैव टू क्लोज द कैप। अभी पुशिंग भी क्या करूं भाई, सो दिस इज
a good initiative. Even though like he's taking a duel इधर अकेले, he knows कि एक बंदे के पास ऑप है और दूसरा बंदा असॉल्ट है, पर दो ही बंदे, तीसरा बंदा कवर देने के लिए नहीं है उनके पास. Okay. I think गोलू, वेट, गोलू उसको रिवाइव भी कर, एग्जैक्टली, दिस मेक्स इट इवन बेटर. अब तो तुम जस्टिफाई कर सकते हो एकदम ही स्किल्स का पुश करना, बिकॉज उसको पता है कि इसको उठाया है. तो अब प्लांट पे तो नजर है ही सोवा की, तो सोवा इसको तो मारने जाएगा नहीं, सोवा तो प्लांट नहीं करेगा. ठीक है, ठीक है. तो ऑब्वियसली चेम्बर ये इसकी तरफ देखेगा. तो दिस गिव्स स्किल्स इवन मोर इम्पेटस, इवन मोर इनिशिएटिव टू टेक ग्रुप डिटेल एनालिसिस. करेंगे भाई, पहले ये वर्ड रिव्यू कर ले, बताओ. नाउ दे नो एक बंदा है वो पीछे था, दे आर पुशिंग. हालांकि जब तक दे आर पुशिंग मतलब गोलू इज डिफ्यूजिंग. वेरी गुड, वेल प्लेड बाय गोलू एंड स्किल्स इधर. वेरी वेल प्लेड. ओके, ये सेटअप देखते हैं. इधर वॉल करके ये लोग को कुछ डिसाइडेड ही नहीं है. फ्रीज टाइम के बाद ये लोग बिखर रहे हैं, ये देखो. फ्रीज टाइम में इनका एवरेज पोजीशन देखो, सी, एंड देन यू कैन नॉट से कि फैंसी यूनाइटेड प्लेज वेल ऑन आइसबॉक्स और समथिंग. फैंसी यूनाइटेड आर नॉट गुड. ये इवन दिस कॉम्प वाज नॉट गुड. नहीं नहीं, देखिए किया गार्डेंस. ये लोथार को देखो, बाद में देखेंगे. अब देखो, मतलब इनका कुछ सेट ही नहीं था भाई फैंसी यूनाइटेड का, ये जिस तरीके से ये राउंड में रोटेट किए. इंडियन लोथार टाइम. ओह नाइस हाइड. ओके, आई विल यूज दैट. हाय मानस पांडे, वेलकम टू द चैनल. क्या आपको कोई दिक्कत है? जी यूजेस वॉट रिव्यू फर्स्ट ऑफ नाउ. APAC groups analysis after first half what review. Was there aim dev yesterday? No, there wasn't. Can you suggest a good comp? I think so. इनका कल वाला कॉम्प was better, मतलब परसों वाला कॉम्प was better than कल वाला कॉम्प. I would not suggest a good comp. Okay. My views are very different regarding Icebox. People may not like my views. थोड़ा इधर देखते हैं वापस क्या होता है. They're taking tubes control. ठीक है. I've taken tubes control. Okay. वनरेबल हो गया है, दो जन वनरेबल हैं. इधर स्मोक कर देते हैं, तो स्मोक पुश कप नहीं कर रहे हैं पीछे से. तब तक स्किल्स आ जाता है. स्किल्स नीचे था, स्किल्स कम्स फ्रॉम बिहाइंड विच इज नाइस. बट जब स्किल्स पीछे से आ रहे हैं देन कप्पा को निकलना चाहिए था. उनका कॉम्प में डुअल कंट्रोल वाज द डिफरेंस मेकर असेंट में भी. फिर भी बता दो. बता दूंगा भाई. Before skills enters this area, I think Kappa should come and clear this area with him as well, because they've not cleared this area. Skills is directly looking this way because he hears sound cues, but it's important that they clear this area as well. So the duo should have worked better in tandem. No coordination issues, but Kappa trades well. Kappa is being traded well as well. अभी यहाँ पे this is SK Rossi. Misses flashes. See, oh my god, मतलब क्या बचा है. एंड आफ्टर दैट ही this frag makes the round. Obviously Golu also plays well there, but this frag makes the round. And Bangladesh simply because of poor positioning. Yeah, positioning was very poor. I've already shown 2 rounds where positioning was very poor. 3-1 बोल के आना था. अबे 3-1 की छोड़ो भाई, पबजी खेल, इन सब गेम में दिमाग लगाता है. थैंक यू मानस. पबजी खेलता नहीं हूँ मैं, बट आप बोल रहे हो, I'll start. So what SK Rossi does here, and I don't know why you called me Indian Lothar. Do you like Lothar or do you hate Lothar? हाँ, PUBG में भी दिमाग लगता है obviously. Yeah guys, never discredit anyone's opinion. Please welcome Manas into the chat.
गोलू प्लेज एब्सोल्युटली वेल. पबजी में दिमाग नहीं लगता है भाई. रोटेशन से हार्ड ऑब्वियसली लगता है. इट्स ओके. दिमाग तो 1+2 कैलकुलेट करने में लगता है. ओह, तने विद द हॉट टेक्स. बट if Rossi doesn't survive that, they don't win anyway. If Rossi doesn't survive this, they don't win anyway because then they clear. देखो भाई सीधी सा बात है. Rossi gets killed. उनको ये पूरा एरिया मिल गया. वाइपर इधर जम करके इधर प्लांट कर लेगी ना. फिर why will Viper stay inside as soon as chamber dies, right? Makes no sense, right? So Rossi का Rossi's kill was way more important. Don't compare my Godspeed with Lothar. My Godspeed is Godspeed. No Lothar. मानस भाई ओके. यस गाइस, प्लीज यस. थोड़ा पबजी स्टाइल में इनको. ये केओ इंडियन भवन है. क्या बात है अक्सर. दिस केओ इज cracked actually. Don't compare my Godspeed with Lothar. My Godspeed is Godspeed. None of Lothar. क्या बात है. See, अभी Viper doesn't have to plant there ना. If Rossi is not alive, Viper will just come and plant here. Simple है. Or here, worst case scenario, मतलब इस जगह पे. There's no need to plant anywhere else. किलो. How did Hell die? चलो Hell को देखते हैं. Hell died तो साइट में ना. Hell हुआ तो स्टैंडर्ड था. वाइपर वर्ल्ड के अंदर ही वाज पुशिंग इनसाइड और वो 1 HP होगा. वो ही डाइड फ्रॉम द स्पिट. स्नेक बाइट. मैं उसको थूक या स्पिट बोलता हूँ बट स्नेक बाइट बोल लो जो भी. सभ्य लोग हम तो पबजी मोबाइल वाले. हमें क्या पता. हम हम भाई थूक बोलते हैं. But yeah, this Rossi makes this round. Absolutely. Rossi dies there and the round is over. Or infinitely harder for Golu to clutch. Lost my soul that day when my 7-year-old cousin told OP बोलते छोटे को बोलते game. हाँ फन मसाला. तू की बोलते हैं सब सोफिस्टिकेटेड. नहीं भाई हम सोफिस्टिकेटेड का हैं. मैं तो स्काउट फैन हूँ. मुझे क्या पता. सही बात है भाई. मैं तो जेन्युइनली पबजी मोबाइल थोड़ा बहुत फॉलो करता था 2019-20 में. बिकॉज मेरे को उसके लिए रिपोर्टिंग का थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता था. पबजी में वाले हो तो पबजी में पे ही रहो ना. वालों की कमेटी गंदी क्यों कर रहे हैं भाई. क्योंकि हमको करनी है तो हम कर रहे हैं. क्या कर सकते हैं मानस. यू आर वेलकम इन द चैट. ठीक है. आराम से बैठो. जो बोलना है बोलो. ठीक है. देखना है देखो. नहीं देखना है मत देखो. तुमको कोई रोक नहीं रहा है यहाँ पे. आई एम नॉट. मैं तुम्हें भीख मांग के यहाँ पे बुला नहीं रहा हूँ. तुम्हें बैठना है बैठो. नहीं बैठना है यू कैन डाउनवोट. यू कैन डिसलाइक. यू कैन. बहुत कुछ है तुम्हारे पास अपने गुस्सा निकालने के लिए कि ये क्यों कर रहा है. इसको नहीं करना चाहिए. राइट. क्यों कर रहा है. ठीक है. पर रहो. मतलब अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा फील फ्री टू लीव. फील फ्री टू पास कमेंट्स. फील फ्री टू डिसलाइक. जो भी करना है कर सकते हो है ना. बट डोंट डिस्टर्ब अस. डिस्टर्ब मत करो यार. है ना. गंदा फील हो जाता है. हम पबजी मोबाइल वाले एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं कुछ करने की. वेरी गुड टाइम आउट इधर. दिमाग नहीं है तो अपने ब्रॉन्ज में खेलो. यहाँ तो कुछ नहीं नहीं. ये तो गाइस नो हेट. सी नो हेट. ही हैज एन ओपिनियन. रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन. हाय क्लॉ. Very good timeout here. Okay, this was a much needed timeout for Fancy. I agree with the timeout, even though work किया नहीं किया पता नहीं अभी, but this is absolutely the right time to take a timeout. Because वो जो था that is very tilting. वो जो रॉसी ने किया that is tilting. कंधर रेक्ट. टाइमआउट देता हूँ. नहीं 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 नहीं. Manas, I have over a decade years. I have over a decade years of playing experience and almost over a decade years of IGL experience in FPS games in CS 1.6, CS:GO and Valorant. मेरे को नहीं बोलना चाहिए पर मैं फिर भी तुम्हें समझा रहा हूँ just because मैं तुम्हें थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. I've played PUBG Mobile. I've played like 30 hours of PUBG Mobile maximum. I've played 500 700 hours of PUBG PC
and I've played Valorant since the beta. I've been coach for over a year. Manas, yeah, I get it, but मैं उसको बस वो बता दे रहा हूँ. So this is my background. If you feel free, if you're here to troll yourself, I'll continue to ignore you now. Free Fire का gameplay का water review पक्का. How to become tier 2 team in Valorant ऐसे please give tips and tricks. I think I'm tier 7. Tier 99 होगा तू. I'm not talking to you particularly, but I am talking to you particularly, right? I'm here to troll chat. Then you please continue. No, I may not be a great coach and analyst, but I'm a coach and analyst. I'm just saying random things. Everybody I was trying to analyze again. Yeah, it's okay. It's okay, guys. No hate. Please let him be. If he wants to troll the chat, it's fine. Our chat is here for multiple purposes. We'll continue with the. So timeout का असर कुछ हुआ नहीं. So this timeout was not for. Okay. So what we can deduce from what is going to happen, जैसे तुम ये देख रहे हो, this timeout was not for tactical purposes. It was for no tactical purposes, right? It was to reset. It was to mentally reset because of what happened here, the SK Rossi incident. I'll call it the SK Rossi incident. Yeah. Okay. Okay. So the SK Rossi incident. So first of all, this was not a tactical timeout. This was a mental reset. Third of all, they said tactical नहीं है तो क्या है? What they said is we'll go back to what was working. Go back to what was working. Okay, which was your full blown executes, right? And G got wind of it, which is very good. Look at G's setup here. They know that पीछे बैकअप साइड हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? They know इस एरिया में नहीं खेलना चाहिए. So look at their average positions. Look at skills is alarm bot. ये इनको बताएगा इस तरफ कोई आ रहा है कि नहीं. So they can take a fight इस जगह पे अगर लेना है तो. Turret is just for a distraction here. And these nanosomes are there to prevent them from planting because ये average position है planting की, right? It is all designed for them to allow them to rotate in time and then they can retake together. They are now avoiding fights actively at A. They are playing denial on A and they are playing information on B with the woman. Okay, so global adjusted as well. Global very well adjusted from global. I think this setup was good. It is a band-aid setup, but it's a good setup. You have so much experience, you can easily write with mouse. क्या कर सकते हैं भाई, जिंदगी भर माउस पकड़ के चलाए हैं हम. सॉरी थोड़ा टोन वैसे चला गया. देहा मतलब आई लव, मेरे को बिहारी उत्तर प्रदेशी टोन बहुत अच्छा लगता है बात करने में, तो मैं थोड़ा कभी कभी उस वैसा टोन चला जाता हूँ. सी यू सी द सेटअप कांटेक्ट पे नहीं है, उसने पहले ही चला दिया बिकॉज उसको ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसको ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट या प्लांट के ऊपर चलाएगा, उसको बस है कि इसको चला दो, पता है आ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स. अभी सी हाउ फास्ट द रोटेशन इज, ठीक है? बिकॉज ओमेन इधर पूरा कंट्रोल लेके रखा है, इंफॉर्मेशन पे 4 जन इतने क्लोज विसिनिटी में आ गए हैं, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू. अभी इधर व्हाट ओमेन डज इज अगेन पिक्सेल्स, मतलब as I said, expect the unexpected with pixels. वो तो देख खुद फ्लैश होके देख 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 देख. ओपोनेंट के पास कोई फ्लैशेस नहीं है. ओपोनेंट के पास कोई फ्लैशेस नहीं है. दिस इज केओ का फ्लैश. 1 2 3. Godspeed, answer my question. What was your question? Can someone copy paste his question, please? In India, why G refrained from split? Sorry if you've already answered this question. Uh, Not really. I don't have an idea why they refrained from split. Against Fancy? Yeah, Fancy split is good, guys. Hello. If you're talking about Fancy and not Griffin, Fancy ka split is good. Meanwhile, me struggling to write on my already. ये Omen carry भाई. Yeah. भाई ये पिक्सल से मैं बता रहा हूँ. If you have seen हाला मतलब
Gaming a part time or full time? Full time समझो. Is gaming a part time or full time? Sort of full time. I work at BlueStacks. The remaining time that I get during the day and night, जितना भी time मिलता है, apart from sleeping, I spend coaching teams, helping teams out, and just improving myself as a coach. My long term vision is to become a full time coach. और इतना पैसा कोई दे कि मैं BlueStacks वाला job छोड़ के इसी से कमा सकूं, है ना? Because I have to sustain myself. I have to. अगर कोई मेरे को उतने रुपए देने को रेडी हो जाए कि लाखों रुपए कि भाई तुम अपना ब्लू स्टैक्स का जॉब छोड़ दो, आई विल हैप्पीली लीव इट. इफ आई लाइक आई नीड सम अश्योरेंस एज वेल. ऐसा नहीं हो कि मेरे को ले और 3 महीने बाद टीम ही बंद कर दो, है ना? पबजी होंगे तो सी फैंस यूनाइटेड आर नॉट प्लेइंग वेल पर्टिकुलरली. अभी देखो डिनाइल हो गया, अभी प्लान करने जा रहे हैं, पीछे का कंट्रोल ले लिया केओ के अल्ट के पीछे पीछे, है ना? पर अभी सी वेरी गुड, इधर स्किल्स ऊपर है, ठीक है. इसके रॉसी सी सो मच. even though killers see even though killers kills 2 here, this global is still in a very good position because now 2v2 2v3 है. okay, कप्पा plays well here. देखो थोड़ा धीरे से दिखाता हूँ. Come to FS. G is statistically based on Icebox and pretty sure he hell knows that too, but why didn't they ban it? Come to FS. That's so great. Your hard work will pay off. Thank you, 16 GB pen drive. क्या नाम है? These Icebox not even play. These Icebox used to be very good. It's not. It hasn't been good for a while in terms of results, and yeah, you can say a lot of individual decision making is wrong here. So this is good. See, skills का position is very good. He just gets asse rolled. After SK Rossi gets a good pick. Killers here, very good individual play from Killers. 2v3 here. Kappa again nullifies that advantage. बहुत अच्छा. Falls back, waits for Hellranger to come. अभी तक प्लांट हुआ नहीं है. यू सी कितना डिले हो गया. 2v2 है, अभी तक प्लांट भी नहीं हुआ है. नॉर्मली पिछले राउंड में क्या देखा, बैक साइड पे खेले, उस समय वो लेने का जरूरत नहीं था. ऐसे दिस इज बेटर, इवन दो इट शुड हैव बीन थोड़ा और रिफाइंड, बट इट्स ओके. नाइफ यूज कर लिया गया है, सब कुछ यूज कर लिया गया है. कप्पा के पास रिकॉन भी नहीं है. हिल रेंजर यूजेस इज फ्लैश, ठीक है. वेरी गुड पोजीशन. सी दिस इज अगेन दिस इज वेयर कप्पा कम्स, ठीक है. इसीलिए you guys don't realize this is why kappa is kappa. This is why kappa is kappa. Okay, he realizes they're pushing, doesn't take a fight head on because he knows कि priority is the diffuser. फैंसी का प्रायोरिटी उसका फैंसी का प्रायोरिटी ऑलरेडी डिफ्यूजर ही रहेगा ना. हाँ, विल कम टू दैट अमन. See, and now once they've won there, he takes that peak, kills chamber, falls back. अब किलर का ध्यान इधर है, but killer has to go and stop the diffuse. So killer has running while moving here, makes him uncomfortable. An uncomfortable fight, Kappa wins the fight. Even if he lost the fight, he plays it perfectly, Kappa. So rather than crying parents not supporting, do something they can follow the passion heroes. Thank you, 16 GB Bandrive. Agree. See, this is Kappa's utility. This is where Kappa, like, this is why Kappa is so revered. Because ये 5-5 होता तो और दिक्कत थी भाई. 5-5 होता इकोनॉमी नहीं बचती भाई. So now ये setup again they've reverted to default, but this time they've changed थोड़ा सा. They've brought Viper here instead of the KO. KO is towards mid. Okay. इस बार अर्ली स्मोक है. पिछले बार एक बार और अर्ली स्मोक था. इस बार वाइपर इज गोइंग विथ सोवा. वेरी गुड पीक फ्रॉम हिल रेंजर. एब्सोल्युटली गुड पीक. सी smokes this off. He is watching smoke push, whereas Rossi is watching this angle. So there's no way anybody can come out without without an unfavorable fight. Any fight here on towards B, either this angle or this angle, will be favorable for G. कोई टाइम आउट दे दो भाई वेबकम्स को.
Roster changes may happen. I don't know. I think fancy trades were better than G. Yeah, yeah. Fancy made a lot. Fancy made more mistakes than G. I would say it's just that G couldn't capitalize on those mistakes. You think G and them, they were only holding mid push and then going up to play pitching. There's a shot that line out the pitching chamber. This round was in favor on G and all like that. Yeah. Look at how systematic this is. And look at what happens here. Okay. Such discipline here. Not peaking. And Ranger, even though he's he's becoming impatient sort of, is trying to peak continuously. Not peaking, not peaking. Prepared to resmokes, right? Entire control. Fancy can't do shit. Now he peaks. SK Rossi misses. They think they can capitalize on this. Isn't expecting Hellranger to still be here. Gets up back, falls back. Rossi takes advantage of Hellranger's misdirection and kills. And it's almost round over here. So again, this is the fight Kappa didn't have to take. Although he whiffs thoda bahut. But yeah, this was almost a perfect round. Almost a perfect round. I have a word. Kappa doesn't perform in domestic international, but in international. Yeah, exactly. It's not just about kills. Kappa has the experience, knowledge, and pedigree to perform in big matches and big events. Best round, I said no. Almost perfect. This round was almost perfect. Okay. This time, the first time they're actually going for some mid control. Eskerosi uses both of his updrafts, take aggressive mid control, but it was risky because nobody else was there, especially during this, right? Nobody else was there to cover him, but it's okay. He takes mid control. Now Sage can just go towards A, where they already know ये सब हो रहा है. They are replicating the same setup. Now they know कि ये setup में क्या होगा. It's going to be fast A execute. So this is the thing I didn't like here. ठीक है? दे नो कि बी पे वो लोग को रोका है. इस बार फिर किलजॉय को बी क्यों खिलाया इज समथिंग आई डेंट लाइक बिकॉज किलजॉय का ये सेटअप एनीवेज इजंट वर्किंग. दिस सेटअप डजंट वर्क एनी मोर बिकॉज फैंसी यूनाइटेड जाके डायरेक्ट प्लांट करने नहीं बैठेंगे. दे विल विटल इट डाउन. फैंसी नाइट का जो कॉम्प है दे कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट गो इन एंड ब्लाइंड प्लांट. ये ब्लाइंड प्लांट्स के लिए दिस सेटअप इज गुड, but it is not good for denial of such a comp because you can't deny them. No, the 8-4 to 11-13. 8-4 नहीं था, I think 7-5 था ना. I don't know. देखते हैं. So this is the problem. This is the problem I had. As soon as I saw this round, I was like, no, they should have continued with the KJ setup here. Jet and Sage इधर बिल्कुल सही है, ठीक है. They could have had Omen still here, and Omen could have still smoked इधर, है ना. Could have used one smoke, जैसे smoke इधर use करा था, could have used the second smoke इधर, right? And even if it didn't use to, he doesn't have to use the smoke. I think they do well. It's just that I think ओमेन इधर इसलिए खेला cause skills ऊपर कोई evasion का option नहीं था. वो एक जन को मार के fall नहीं कर पाया. He was immediately traded. So they thought कि नहीं इधर ओमेन खेलेगा तो at least वो कुछ better कर सकता है individually. Agreed. Single controller में ओमेन is not the pick. Single controller ओमेन is not viable on Icebox. जो तेरा मन. 4 टुकड़ा. हाँ ठीक है. So this was my problem with the setup. बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है. I think Sova here is good, but I think they swap Killjoy and Omen because see B पे you don't need ये setup because SK Rossi is here, Sage was here, right? So they are already in a position to react to B अगर वो लोग क्विक B कर रहे हैं या B आ रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना. A के तरफ ज्यादा चाहिए था. आई थिंक किलजॉय को A के तरफ खिलाना बेटर था यहाँ पे. सैंडविच ओपी. G overthinks a lot in attacking. Yeah, attacking पे आएंगे. So it's 7-5 हुआ. Thoughts on this comp? Omen, Chamber, Viper, KO, Sage. It's a good comp. It's a good comp, but yeah, Sova. I particularly don't like, to be honest,
I personally don't kind of like no duelist comps on maps like Icebox or Breeze. This is just me because I think with a duelist you can do far more on open maps. Open maps mein duelist is necessary. Closed maps, corners maps, ये सब में you are anyways you can play that style because open maps में you can't afford to play that style. It's just my own philosophy. मतलब you can have it for a particular counter or something, but never वैसा. And Fancy was doing the fanatic style of taking two, three flanks and pinching for both. Yeah, at B skills couldn't enable a swarm unit because of KO knife quite sometimes. Exactly. Best comp according to you on Icebox. बेस्ट कॉम्प पहले तो वही वाला था. ठीक है, पहले आई वुड से शुरुआत में जेट. ठीक है, सोवा, वाइपर, सेज, एंड देन आइदर यू कैन हैव केजे, रेना और केओ. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू प्ले. दिस इज एन ऑप्टिमम कॉम्प. ठीक है, जेट, रेना, केओ, आई मीन केजे, रेना, केओ, जो भी फिफ्थ प्लेयर. ठीक है, ये पहले का था. नाउ आई हैव लाइक मेथड टू आइडियोलॉजीज. एक तो जेट, ब्रीच, ब्रिम, सोवा, एंड देन फिफ्थ whoever you want. Maybe you want viper. ठीक है, maybe you want sage, maybe you want kj or chamber, depending on how you want to play. ठीक है, ठीक है, and maybe you can replace Sova with KO or Sky, right? Oldest comp because they're playing on the old patch. Yaar. What about Jet Raise comp of G2? I think it is better now with this changes, but I would still not recommend Raise. Breach, yes, Breach. And the second one I would say would be Jet, KO, Sova, Viper, like very standard, and then Chamber. This is very standard. जो second वाला है, that is still viable, but I think Breach and Brim का combo is very good now. Breach and Brim, I would say Breach and Brim on most maps is now the way to go. Chambers addition could be much better. हाँ वही बोला कुछ भी. Raise, Reno, Omen, Sage, Viper, Chambers, so it depends. मतलब भाई ये सबका अपना अपना तरीका है गेम को देखने का. नो सेंट्रल वही तो बोला ना, चेम्बर ले सकते हो तुम. चेम्बर, सेज, कुछ भी ला सकते हो सेकंड में. ओके, ये राउंड थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. यहाँ तक कर लिया. यहाँ पे फ्लैश यूज करते हैं लाइन ऑफ साइट को हटाने के लिए. मूव इनटू हेल रेंजर डाइस वो छोड़ो, बट बैक ऑफ साइट का कंट्रोल मिल गया. नाउ दिस इज अगेन रॉसी. दिस इज जस्ट प्योरली रॉसी. किलर किल लेता है. रॉसी किल्स टू, अनफॉर्चुनेटली गेट्स ट्रेडेड. मतलब गोलू गेट्स ट्रेडेड और फिर रॉसी आल्सो डाइस. अदरवाइज Rossi gave them a way back into the round. यही imagine if KJ was at A. सेम होता जो पिछली बार हुआ. केजे उनको डिनाई करती, तब तक रोटेशन आ चुका होता. रोटेशन आ चुका तो लोग अच्छे से रीटेक कर सकते थे ऑन द बैक ऑफ ओमेन्स फ्लैश. ओमेन का फ्लैश को पहले यूज करके डिनाइल के लिए यू हैव नलिफाइड और रिस्ट्रिक्टेड योर ओन एबिलिटी टू रीटेक साइट. रीटेक दो तरीके के होते हैं यार. रीटेक होता है प्री प्लांट और पोस्ट प्लांट. यू कैन समटाइम्स मेक अ क्विक रीटेक प्री प्लांट, जैसे कि ग्लोबल ने पिछले बार किया था. यू डोंट नेसेसरली हैव टू रीटेक पोस्ट प्लांट. और दूसरा रीटेक्स ऑब्वियसली दो तरीके का होता है. यू रीटेक साइड्स एंड देन यू रीटेक एंगल्स. आपको मालूम है रैंक क्या है मेरा? हाईएस्ट रैंक इमॉर्टल 3 था. लास्ट रैंक इमॉर्टल 1 था. इस एक्ट में मैंने रैंक ओपन ही नहीं किया अभी तक क्योंकि मैं खेल नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है. बस स्काई सोलो सीनेटर नेवर. अमन, सच एन ओपन मैप, सच अ बिग मैप. सिर्फ स्काई से तुम मर जाओगे, खत्म है गेम, खेलो ही नहीं. हेलो और यू हाय नमन.
too good. Yeah. So again, I don't know. I think breach brim suits global as well a lot. Brim का तो पता नहीं पर breach तो definitely suits them. They already know so much and how to play breach, utility कैसे use होता है ये सब. It's already embedded. I think अच्छा रहता. Sky chamber raise viper. Raise single duration icebox, then you're not using verticality उतना अच्छा से. You have to either use neon to cover up open spaces or jet. What take you know, Sky खेलो ही मत in general. भाई स्काई मेरे को पसंद हुआ करता था पहले बट नाउ विथ ब्रीच ये जो नया मेटा है इसमें ब्रीच एंड केओ इज जस्ट बेटर देन स्काई माय ऑनेस्ट ओपिनियन. हाफ हो गया. Yeah, sort of. You don't have a particularly aggressive entry. You have pseudo entries. You have Omen who can pseudo entry for you. You have Chamber who can pseudo entry for you, but you have no real entry. किसी ने फॉलो कर लिया ट्विच पे जाके. अरे भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो गाइस. व्हाई आर यू फॉलोइंग ऑन ट्विच? लेकिन एम डिफ था नहीं भाई. एम डिफ कुछ नहीं था यार, मैं बता रहा हूँ. एम डिफ बोल के कुछ नहीं था. वेरी ऑनेस्टली एम डिफ नहीं था भाई. I think breach makes game obvious and readable. It's high time to bring KO in when we haven't found. मैंने तो मना नहीं किया. मैं तो बोल रहा हूँ खेल सकते हो भाई. हेवन का बात ही नहीं कर रहा. हम आइसबॉक्स की बात कर रहे हैं. गॉडस्पीड जॉर्ड हो क्या? नहीं यूजर. नहीं यूजर. मैंने किया. क्या बात है राहुल. फिर अब सब जाके फॉलो करोगे. कल उन लोगों ने अप टू मार्क नहीं खेला जो हर बार एक्सपेक्ट रहता है. एग्जैक्टली. लुक एट देयर डिफॉल्ट. देखते हैं क्या कर रही है डिफॉल्ट में. कि फेक टीपी जेट बहुत ही विड्रॉन पोजीशन में. दे आर एक्सपेक्टिंग मिड पे अग्रेशन. नाइस. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता लाइक जनरली. और दिस वॉल आई थिंक सी अगेन ये वॉल आने का मतलब है ये वॉल के वजह से दे आर एक्सपेक्टिंग मिड पुश. सो दिस वॉल इज नॉट गुड फ्रॉम फैंसी बिकॉज दिस वॉल मेक्स इट ऑब्वियस कि मिड पुशर. और पहला बात तो स्ट्रेट वॉल्स आर नेवर गुड अनलेस एंड अनटिल इट्स नेसेसरी फॉर प्लेसेस लाइक दिस. यहाँ पे नेसेसरी होता है. इवन देन देर आर बेटर वॉल्स. देर आर मच बेटर वॉल्स. ठीक है. बिकॉज डायगनल्स में यू कवर मोर एंगल्स. यू टेक चार्ज ऑफ मल्टीपल एंगल्स. इधर वॉट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट डिनाइंग देम दिस एंगल एंड दिस एंगल है ना. बट लेट्स से यू डू दिस वॉल. You are first of all ये वॉल ही गलत बन गया मेरे से. ऐसा वॉल बनता है बे यार. क्या टेढ़ा बन जा रहा है. बट यू गेट द जिस्ट गाइस. ऐसा वॉल. फर्स्ट एंगल यू आर डिनाइंग देम इज दिस. ठीक है. सेकेंड एंगल यू आर डिनाइंग देम इज दिस. तीसरा एंगल यू आर डिनाइंग देम इज दिस. चौथा एंगल यू आर डिनाइंग देम इज दिस. Immediately better. So much better. So much better. So diagonal walls are always better than straight walls. Sometimes you have to be if you playing a certain way कि भाई हमको बस यहाँ पे vision deny करना है. But the problem is पहला बात you give up way too much. ठीक है. और इस wall का है it is very committed. As long as you give up this control, this wall is rendered useless. इसका और कोई use ही नहीं है. पहला बात तो. एंकर वॉल राइट यूजर. भाई ये वेबकैम वालों को बहुत फॉलो यू करते हैं. प्लेन टीम सीडेड. हाँ हाँ देव सीडेड. जी कैन प्ले ब्रीच के उसके या आपके एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वीएलटी. आई थिंक दे कैन क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स स्टिल. स्ट्रेट वॉल अच्छा रीटेक के लिए. हाँ तो वही है ना. बट उसका उससे क्या होता है देखो. अभी स्ट्रेट वॉल ये जो है ये स्ट्रेट वॉल से क्या होता है.
तुम इतना एरिया तो ऐसे ही गिव अप कर दे रहे हो ना भाई, ये एरिया तो तुम दे दिए, तुम बोले भाई हमको तुम, होता है ना 2 बीघा जमीन दे दो मेरे को इतनी सी जमीन चलेगी, ये जमीन तुम रख लो, मैंने खरीदी थी, ये मेरे लिए बनाई गई थी जमीन, है ना, हमारे दादा परदादा ने ये जमीन हमारे लिए बनाई थी, ये पूरी हमारे लिए पूरी जमीन बनाई थी, है ना, पहले हमने इतनी जमीन तुमको दे दी पहले, ऐसे ही गुंडे आते हैं हफ्ता वसूल करने, बाय बाय किलो, है ना, गुंडे आते हैं वसूल करने, हमने ये जमीन ऐसे ही दे दी, हम बोले हमको इतनी जमीन चलेगी। अब तुम अगर पहले ही रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को चलोगे, इतनी जमीन लोगे, तो अल्टीमेटली ये जमीन वाले को तुम बेकार का एंट्री दे रहे हो अपने जमीन पे। जो बंदे इतना जमीन ले लेंगे, वो फिर आसानी से ये जमीन ले पाएंगे ज्यादा, है ना। तो दिस इज नेवर गुड एज अ स्टैंड अलोन, दिस वाइपर वॉल इज नेवर गुड एज अ स्टैंड अलोन। तुम इसको कंबाइन कर सकते हो, यू कैन कंबाइन इट विथ लेट्स से केओ, है ना, कि वाइपर वॉल से जैसे ही कोई निकलने का है या कुछ है, तुम इधर केओ का नाइफ मार दो, ठीक है, पीछे बॉक्स के केओ को इधर खिलाओ या बैको साइड खिलाओ, इधर केओ का नाइफ मार दो, ठीक है, या यूज इट टू कंबाइन इट विथ केजे या सेज समथिंग, है ना, देन इट्स ओके, अदरवाइज इट्स नॉट। एनालॉजी ओपी, हाय, ट्राई करते हैं हम लोग बस कुछ भी एनालॉजी देने का, ठीक है, बट दिस वॉल फ्रॉम द डिफेंस इट टेलीग्राफ्स देम कि भाई मिड पुश होने वाला है, इवन दो द फ्लैश इज गुड, दे कांट रिएक्ट वेल इन टाइम, Eskerosi gets a good pick, skills gets a good pick, they should fall back now। अब ये yes I can इतना कंट्रोल ले लिया, ठीक है, बिकॉज ही सॉ कि मिड के तरफ इतने लोग हैं, सेज वॉल बेटर रहेगा, हाँ जो भी, ये बंदे को डैमेज देता। अब इसके बाद yes I can शुड बी डेड, ठीक है, फ्लैश भी हो गया, ये भी हो गया, इधर ये वो, इधर ये स्पिट अच्छा यूज करता है, ठीक है, इधर ये स्पिट अच्छा यूज करता है, बट वाई इज एस्केरोसी गोइंग अलोन इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो ये फ्लैश करके हिल रेंजर शुड गो विथ हिम, नॉट होल्ड दिस एंगल, बिकॉज ये एंगल तो सोवा होल्ड कर रहा है ना, इट मेक्स नो सेंस फॉर हिल रेंजर टू होल्ड हियर, जबकि सोवा ऑलरेडी आ रहा है। If you go back 5 seconds, see he flashes, good flash, now इधर why is he holding here, because सोवा तो ये एंगल पकड़ लेगा अब अंदर आया तो हिल रेंजर शुड पुश विद जेट, तो फिर इजीली ट्रेड हो जाता है ना। to exploit parted ways, just be tweet, okay I'll see। अगर तो जी को कोई जरूरत तो पक्का विन है जी के लिए, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब वेरी गुड एनालिस्ट, सीए वेरी गुड एनालिस्ट, दे आर ऑल वेरी गुड, like there's no one I would say is better than the other, I may be let's say better in coaching, but you know like in analysis obviously they are like we all are better, I am just good in coaching because I have experience in coaching और कुछ नहीं है, I may be better than him in coaching because I have experience coaching. Coaching, as in coaching, is a very wide term, but from analysts, and they are not just analysts. They are analysts just by pseudonyms. They are just analysts by names. असल में they are doing a lot of the stuff that coaches do. So RG करेगा ना, RG has their own coach यार. Blue, again Blue is I feel again मतलब I may be wrong, but to me Blue is an exceptional analyst. Blue can be a like Blue can be go like can go at an international level for analysis, for analysts. As far as coaching is concerned, I haven't seen anything, so I can't say much, like I don't know what he's done in terms of like how he coaches, what is his philosophy and all of that. So as an analyst I know, because Blue, I have seen Blue, like Blue ka concept, I have talked to him pehle, and uska formulas और ये सब जो भी है, like he has very interesting, he has a very interesting concept of looking at Valorant from a numbers perspective and a statistical perspective, which I can see। देखेंगे भाई देखेंगे, ये राउंड कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे। रख दो तेरी, Papa does well here, but again, वो
allowing ASI can so much room. अगर वहां पे हेल रेंजर would have peaked, ASI can would have been dead उसी समय. इधर इधर हेल रेंजर पीक करता उसके साथ तो ट्रेड होने का चांसेस ज्यादा रहता. मे बी बोथ ऑफ देम डाई बट ट्रेड होने का चांसेस रहता. अभी अब क्या हुआ, अब रोटेशन भी आ गया. His chances have lowered and I don't know why Hell Ranger fell back. ऐसे राउंड में टर्निंग पॉइंट था वरना नहीं से स्कोर होता. मे बी उसके बाद भी राउंड हार सकते थे वो. हम बस वो एक पर्टिकुलर सब इंसिडेंट की बात कर रहे हैं. विद इन एन इंसिडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट सबलेट ऑफ एन इंसिडेंट. इंसिडेंट वाज कि they were confronting Viper here. उसका sublet is SK Rossi peeking him here and pushing him back or taking like confronting him. We are talking about sublet of an incident. It's very different case. वाइपर को डर नहीं है भाई. तो क्यों डर रहेगा? He knows he's already dead. वो पीछे नहीं भाग सकता वहां पे. He's flashed and everything. So he committed, which is what anybody should do. Instead of trying to fall back, you should have the mental capacity to understand that you're done. And if you know that you'll be done, then it's better to be aggressive and deny them control for as long as possible. जब तक तुम कुछ और since he survives उसका आ गया तब तक cover backup. Now skills का बेचारा. I don't know about Neon. I don't know if in India people are capable of handling like Neon right now. Which got him a round and 3. Exactly. Yeah, user maybe बोल सकते था नहीं था but obviously round तो जी एक extra round तो मिलता. Pistol का advantage is a lot, especially when you are 7-5. If you win the pistol, you're 9-5, and the bonus, even if you lose the bonus, you still have a 3-round cushion when you started with a 2-round cushion. And like वो double figures आना is also a mental HSP tweet. देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ. Again, this made no sense. ये वाला सेटअप देखते हैं क्या है. Kappa with the Marshall. उसकी रस्सी with shorty. Okay, now it makes sense. They're again trying for the same wall and mid control. They know mid control हो रहा है तो immediately take. He tried to close the gap and fire a shorty. Gets the plant down. 4v5. It's still very good. SK Rossi pushed them back. Very good play there. Might have even got some damage in as a shorty if they were closer, but it's okay. Omen is spotted at a shorty. अब वो मर गया. ये Kappa tries something, doesn't. That's a good retake, but again, like कोई फायदा नहीं है. like उनको मिल गया उनका चीज. उनको प्लांट चाहिए था. न्यू योरू might also be exciting. बट तो रहते ही हैं स्टिल कांट से एग्जैक्टली. मे बी 11 मे बी. नाउ लुक एट सेटअप. अब वाइपर वो वॉल नहीं किया अभी तक. क्या करेगा वापस? होप नहीं करे. इस बार वो वॉल नहीं है. तो जस्ट डू अ वन वे स्मोक. रिकॉन आता है. ए पे ओमन ने ऑलरेडी कंट्रोल ले लिया वहां तक. मिड पे कोई प्ले नहीं. ये चीज ही मेरे को नहीं समझ में आया. विथ ओमन मिड कंट्रोल इज सो मच इजियर. मतलब जेट ओमन है, सोवा है. मिड कंट्रोल लेके खेलना चाहिए था जी को. बट स्टिल दिस इज गुड. वो बी पे प्रेजेंस थोड़ा सा दिखा के दे नाउ फॉल इनटू वे. वो मिड चेक करने जाता है वापस. ये वाला स्मोक. दिस इज गुड. स्प्लैश आता है. चेम्बर फॉल्स बैक ऑफ साइड. साइड कंट्रोल मिल गया. प्लांट कर रहे हैं. इट्स अ 5v5 रीटेक. पोस्ट प्लांट के लिए नैनो सॉम्स डाल दिए गए हैं. चेम्बर प्लेस पुअरली. डजंट हैव टू पीक देयर. जस्ट हैज टू होल्ड ऑफ टिल ऊपर आ जाए. गुड फ्लैश फ्रॉम टीम. बट एसके रॉसी का पोजीशन इज जस्ट टू गुड हियर. Just peeks and obliterates 2 people here. Killer though. Killer bhai. Killer out of his mind, dude. This guy played out of his mind. Yesterday we had that round where LF was planting in the open in a 2v1. I don't know why. What's with your opinion? Breach plus KO in Ascent. KO plus Sova. KO Sova is better, I feel.
ब्रीच प्लस केओ नहीं होगा यार, ब्रीच प्लस सोवा ही खेलो, बट ब्रीच प्लस सोवा असेंट में उतना आई डोंट फाइंड यूटिलिटी इन ब्रीच प्लस सोवा ऑन असेंट, टू बी ऑनेस्ट. मतलब you have to combine them with more, like you have to combine breach plus sova then with an omen instead of astra, and then a lot of things, maybe even a brem and round what with the okay. एक राउंड भवन वाला में भारी पड़ा वो भी साइड में. It's a good round, good conversion. Let's look at the setup. Okay, full buy में they're playing 4 towards A. बताओ फैंसी यूनाइटेड का सेटअप. एंड फैंसी यूनाइटेड पहला 2 राउंड में दे शोड सम मिड अग्रेशन, उसके बाद पूरा पैसिव हो गया मिड पे. देखो पिछले राउंड भी नहीं लिया, इस बार भी कुछ भी नहीं लिया, बट जी नेवर इवन ट्राइड टू prod something prod at mid towards mid. Almost all the time. KO is viable. KO is more like a counter agent. But as I said, on particularly 3 maps, Icebox, Breeze, and Heaven, KO can eliminate possibilities, because if you have a lot of possibilities on these 3 maps. KO can help you eliminate certain possibilities, which is why he's more viable on these 3 maps. मतलब हम वही वाटर पे कर रहे हैं अंकुर. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई डोंट थिंक फैंसी आइसबॉक्स इज गुड. आई थिंक फैंसी का 2 गुड मैप्स आर स्प्लिट एंड एसेंट, टू बी ऑनेस्ट. वेरी क्विक कंट्रोल. सेज का यहाँ पे फायदा दिखाई दिया. दिस इज वाई सेजलेस फैंसी को इतना टाइम लग रहा था साइड कंट्रोल लेने में. प्लांट हो गया. अनदर 5v5 रीटेक. ये लोग पीछे से 2 pronged कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रीटेक कर रहे हैं, विच इज गुड. दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. बट जी होल्ड द ग्राउंड. ओके, और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. ये बंदा तो मरता ही है, उसके साथ साथ they're already pushing yellow. They're dividing the post plant. They're basically dividing the post plant, denying them the ability to play passive post plants. ये सब जगह पे वाइपर और वो मतलब जहाँ पे खेलते हैं, ठीक है. आई थिंक सो केजे का वो सब के लिए. एंड एट द सेम टाइम, तो बेसिकली इफ दे आर पुशिंग हियर, नॉर्मल कॉन्शियंस इज यहाँ पे, बट दे आर ऑल्सो पुशिंग फ्रॉम हियर. So it's always good to shrink. So basically possibilities are shrunk. If you're तो इधर तक अगर कंट्रोल मिल गया और इधर तक कंट्रोल मिल गया, अब वो जो बंदे हैं अब डिफेंस सिर्फ इतने से एरिया में है, तुमको पता है, बिकॉज तुम पीछे से सारे पॉसिबिलिटीज कवर करके आए हो, आगे से सारे पॉसिबिलिटीज कवर करके आए हो. अब बस इतना ही बचता है. पहला बात तो श्रिंकिंग द मैप फॉर द ओपोनेंट इज ऑलवेज गुड. रीटेक हो, पोस्टमेंट हो, कुछ भी हो. And then they're denying them post plant पे comfort positions. जी का फायर पावर बहुत कम है. Maybe use chaos kind in heaven. Yeah, you can use chaos kind in heaven. Still fancy picked icebox. I think they picked icebox after seeing like Griffin के साथ क्या हुआ. And I'm not saying fancy का icebox is not bad, is not good. Maybe they think it's their best map, but I feel split and ascent में G would have faced more problems against फैंसी. आई टोल्ड दिस. मैंने पिछली बार स्ट्रीम पे ही बोला था, स्प्लिट और असेंट में फैंसी माइट बी एबल टू पुल ऑफ समथिंग. Xbox, I don't think फैंसी should have won. हाँ डेविल, मैं वही बता रहा हूँ. वेलकम टू द चैनल डेविल. See, the thing is, devil, you can provide criticism, but sometimes you can provide solutions as well apart from criticism. कोई criticize नहीं कर रहा, हम instead we are providing suggestions as well along with criticism, which I feel is better than just criticizing teams or players or performances. Yes, वही. इस setup को देखते हैं. So now G is
गोइंग मोर टुवर्ड्स थोड़ा अग्रेसिव इंटेंट के साथ, बहुत अच्छा काउंटर डिफेंस, बहुत अच्छे से उनको डिनाई कर रही है। आसरोला इज फकिंग मैड, तभी वो उधर है वहाँ पे, आप इधर। बिल्कुल सही डेविल, बिल्कुल सही। आई फुल्ली अग्री विथ यू डेविल। नहीं नहीं, अरे डूड दैट्स ओपिनियन गाइस, लेट्स नॉट शैटर समवन्स ओपिनियन। देखो, द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस is how fans united deny global any semblance of control. KO का फ्लैश डिनाइज पूरा ऊपर का प्लेटफॉर्म कंट्रोल। ऐसा रोला तब तक पागलबंदी करके सामने आ जाता है। क्या पब्लिक है भाई, अकॉर्डिंग टू विलर स्टेट्स एंड हाई विन परसेंटेज। सी VLR दे फेस, फैंसी हैव मोस्टली फेस देयर ओन कंट्रीमैन, राइट? तो उनका कंट्री के साथ उनका नहीं जमता होगा, बट मैंने जो उनका प्ले स्टाइल देखा है स्प्लिट और एसेंट में, दे दे प्ले अ सर्टेन स्टाइल जो ग्लोबल नहीं हैंडल कर सकती। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली मैंने ये बात पब्लिकली भी बोली है, प्राइवेटली भी बोली है। टीपी साउंड तो आया होगा, उसका कोई बात नहीं है, बट लाइक श्राउडेड भी हो सकता है ना, बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन, यू कांट रियली अंडरस्टैंड कहाँ टीपी हुआ है। रिकॉन आया, फ्लैश आया, शॉक डार्ट आया, नाइफ आया, शॉक डार्ट नहीं आया, नाइफ आया। Asurola takes this, denies control पूरा। KO is also covering his angle, पर वही है कि अभी सी सोवा देखो कितना अच्छे से ये लोग खेल रहे फैंसी का ये डिफेंसिव सेटअप। सोवा ये एंगल देख रहा है ओमेन का कि अगर वो ही माने है, ओमेन ये एंगल देख रहा है और ओमेन के कांटेक्ट पे KO पिक करेगा। सिंपल सिंपल थिंग्स, फैंसी डिनाई देम परफेक्टली। भाविन भाई का दिमाग पता है, तभी वो उधर है बेस्ट टीम में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है टेबल। मैं रेडियंट नहीं हूँ भाई, मैं सिर्फ इमॉर्टल 3 था। God Hellraiser, oh god, that's why I said. Yeah, there's a lot of things going on now. Way a problem, and you have to understand Hellranger is also micromanaging things. It's always tough for Hellranger in these positions, which is why I think Omen makes sense for Hellranger. We talked about it privately, कि मतलब privately in the sense group of friends, कि हिल रेंजर को ओमेन पे बिठाने से his own individual impact is heightened because now he can do so much more individually, doesn't have to worry about a lot of other aspects because he's already micromanaging the team, call outs ये वो, so it's a lot of burden, you know. वो देखो जीज पुश सो फार बैक, ठीक है, कप्पा स्टिल टेक्स डाउन बहुत ही अच्छे तरीके से असरोला विदाउट पुचार। हेलो बॉन्स, वो और आगे निकल भी जाएंगे लेकिन आप यही करते रहोगे डेविल। मैं तो यही करते रहूंगा बिकॉज यही मेरा काम है, मैं कोच ही हूँ, मैं यही करूंगा। और वो आगे निकल जाएंगे, वो VCT एपैक में, मैं कहीं और हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं भी घर में बैठा हूँ एंड ऑल दिस, मतलब घर में बैठा तो हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बेरोजगार हूँ मैं डेविल। थैंक यू फॉर। चल रहा बोन्स, यू टेल मी भाई, क्या फोटो थी भाई बोन्स? ऑलराइट भाई क्या फोटो थी भाई? मलव हकाल रहा है भाई, मलव कुछ भी कर सकता है। मलव इज आपकी नहीं है उनके आसपास, आप कहीं नहीं हो उनके आसपास। ऑब्वियसली मैं घर में बैठा हूँ, वो सिंगापुर में। डेविल, इट्स वाइट बोन्स भाई, क्या फोटो थी लेकिन, क्या गजब। वाइट बोन्स, नहीं नहीं डेविल, यू आर वेरी करेक्ट, आई आई फुल्ली अग्री विथ यू यार। इट्स वाइट बोन्स, मिरर में तो ऐसा नहीं दिखता है सारा दिन। वो वही क्या कसम, मैं बोला भाई मुझसे मैं नहीं फैला, और आप तो गॉड स्पीड के भी आसपास नहीं। अरे ठीक है गाइस, देखो हिज ओपिनियन, प्लीज डोंट बैश, हम कंटिन्यू करते हैं ये सब, ठीक है। दे आर पुशिंग देम बैक, कप्पा डज ब्रिलियंटली विदाउट एक्सपोजिंग हिम टू सोवा, वो अच्छे से उसको टेक डाउन करते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड नाउ सडनली थिंग्स ओपन अप बिकॉज नाउ KO हैज नो वन टेलिंग हिम कि कांटेक्ट पे, इसके कांटेक्ट पे पीक करने, और उसको डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ही कैन डाई, सो विच इज व्हाई ही थोड़ा सा पैसिव आ जाता है वो, ठीक है।
and they bring in other cavalry as well. Chamber bhi aa gaya, but now they are counter pushing. They are pushing harder. Like G pushes them back with ability. Very good. See, this is the thing with Fancy United. They are relentless. They were relentless in this aggression. Like उनको पता था उनका strength क्या है, which is aggression, and they continue to do this. Even though Golu kills him, like they didn't deter themselves from this. मतलब वो लोग करते ही रहे. Now this 2v1, Golu falls back. Opinion hate में difference है. Devil, if there's someone I respect the most in IGC, it's बजाज वाके दूध के यहाँ जाने भाई. उनके मुंह के सामने बोल के देखा खड़े खड़े मुंह. अरे नहीं guys. ओपिनियन हिट में ऐसा फ्लिकर बोला था. He could have said he doesn't like that analysis if he doesn't. No need to say shit like what he typed. Okay, jokes apart. Just joking, don't take it seriously. I have subs and like already. थैंक यू डेवल. मोटू जी भाई एम डेव तो था एक बंदा एटलीस्ट दो हमारा भाई. मोटू जी पहला बात वेलकम. आपका नाम मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ. दूसरी बात एम डेफ नहीं था. आई विल कंटिन्यू टू बैक दिस. मैं नहीं जानता एम डेफ नहीं था. मैं बार बार यही बोल रहा हूँ एम डेफ नहीं था. मैंने जो देखा मेरे को एम डेफ नहीं लगा. ऑनेस्टली वेरी ऑनेस्टली एम डेफ नहीं था. वाइपर कैम्पल पेड ऑफ. आई डोंट नो. मैंने बोला शुरुआत में कि आई 3 थिंग्स आई डिड नॉट लाइक. पहला मैच में इफ यू कमिटेड टू अ कॉम्प, ये कॉम्प विल चेंज करने का जरूरत आई डिडंट फील लाइक. आई थिंक पहला वाला दिन वाला कॉम्प वाज मच बेटर देन दिस कॉम्प. सेकेंड ऑफ ऑल अगर किया भी तो द सेटअप्स एंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर, रॉसी का पोजीशनिंग ये सब वाज नॉट ऑप्टिमल ये वाले मैच में. शुरुआत में रॉसी और पॉप अप हो सकता था, कर सकते थे. आई थिंक दे ऑल ट्राइड द बेस्ट. इट्स नॉट लाइक कुछ नहीं. नहीं अब से सिंगापुर में स्क्रीम शेयर का हाउ डिड लूज दिस राउंड. या सो दिस राउंड वेरी गुड क्वेश्चन. Again rotation आ गए. See this is the thing. 20 seconds left. They separated, which kind of makes sense if they had more time, but I don't think they should have separated. Obviously they know थोड़ा हद तक कि वाइपर ए पे गया होगा. ठीक है. Honestly, I feel Hellenian Kappa mechanically very weak. Call it hate or anything, but that's the truth. Expecting someone to say, तू जाके खेल ले. ऐसा कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे. पहला बात, हमारी चैट बहुत ही ज़्यादा educated और बहुत ही ज़्यादा सभ्य है. Jinx, we don't say shit like that. Second of all, I believe Hellranger, if you say mechanically very weak, I don't think anybody is mechanically very weak. Hellranger used to be the secondary duelist. दूसरा बात, Kappa has shown time and again, especially पिछले एक month में, कि he can step up so much. He's done like his impact has been immense in the last 2 months. If it was not for Kappa, they would have never reached the stage, the playing stage. Will add a 6-man or any roster changes. I think rostering may be necessary, but I think it's up to them to take a 2-day, 3-day breather, calm down, sit down with each other, and figure out how the next steps. We should not do anything in haste. ठीक है. There wasn't aimed at all. Exactly. मैं वही बोल रहा हूँ. अभी वही है कि सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट होना सेंस बनता इफ दे हैड मोर टाइम ऑन देयर हैंड्स एंड दे न्यू कि वाइपर ए पे था तो वाइपर रोटेट करेगा. तो माय आइडियल सिनेरियो वुड हैव बीन कि दोनों इधर आते, ट्राई टू प्लांट हियर. ठीक है. बिकॉज चांसेस आर, अगर तुम नापोगे, so there is no chance that Viper rotates from A all the way crossing this area to here before they were here, right? Before they come from mid and take this position. It's almost the same. And Viper's rotation will always be a bit later because he's reacting, not even whatever whiffing. What do you think about VLT now? It is good. The stats very weak. No condition. Everything strong and show up when they require. They had a bad 20. Now it's up to them what to do. No, not this round, please. Malav, are you free? So now there is no way for Kappa to give Kolu cover, which is sad. And this is essentially the end of the round. Because there is no way Kappa comes and tries to kill him anyway. I think this was the round that सबसे ज़्यादा चुभेगा for
No hate, but Kappa is holding the team back. See, majority of the short cuts and recons are useless. Useless? पागल है क्या? Kappa has one of the best utility usage भाई. क्या आप बोल रहे हो? एक वैलो प्लेयर को प्रो बनने के लिए उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए? जीतने का, हार नहीं मानने का, हार से हताश नहीं होने का. Always give your all. Whatever time you have in terms of leisure, keep use that to research more and more about the roles you are playing, about how a team plays, about how a team should play, about how your team is playing, how you can help your team in more ways than one. So, भाई सबसे ज्यादा डेडिकेशन और डिजायर चाहिए. आई रियली नो वांट टू नो हाउ पीपल इवैल्यूएट प्रो प्लेयर्स. कुछ भी बोल देते हैं. Damn bro, what was with the grind? You're still streaming. Do you stream on Twitch? I want to drop a sub, but I guess from Singapore I can't sub on YT. Can't see the option. You can't sub on YT? Eh? Yeah, I do stream on Twitch here and there. But yeah, I just follow. What do you think about VLT first match? Will they win? I hope so. I think so. They should win. Chat में मोटो जी क्या बोला? VLT can win against possible. तो possibility थोड़ा कम है, but possible. गांजा पी के आया क्या? साहिल शाह क्या बोल रहा है? साहिल शाह ने पिंग के चक्कर में स्टार्ट्स रह गया. नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है. ही मीन्स ज्वाइन. Sub as in join or membership. Oh, because my monetization is not on, Sushant. It will soon, hopefully, fingers crossed, be on if you guys continue supporting me like this. Sub equivalent is member in YouTube. Yeah, it will hopefully be on soon. Like if you guys keep supporting me, hopefully in 15 days, 20 days on ho jayega. But yeah, I mean, it's not necessary, guys. You can just come here and support me in terms of like talking to me, like back and forth. ये जो conversation हो रहा है, discussion हो रहा है and all that. All right, all good then. No problem, Sujan. And I do stream on Twitch, पर उतना नहीं करता, so waste हो जाएगा. यार में पिकमिन करो प्लीज. पिकन्स हाँ करेंगे. ये कर लेता हूँ प्लीज. क्या लगता है ग्रुप डी का? करते हैं, सब बात करते हैं. ये खत्म होने वाला है थोड़ा सा राउंड से. बहुत मेहनत से हमने किया. ये पूरा खत्म करके बात करते हैं. Again, a very good timeout. What's a primary source of income? I work for BlueStacks, Sahil. And then coaching में थोड़ा बहुत income है, पर उतना नहीं है. Coaching का income is 1/3, 1/4 of my BlueStacks income फिलहाल, because coaching में how much do you get? Like 25K अभी maybe. And I'm trialing in a few places. वहाँ पे if it goes well, then like 25, 30, 40,000 maximum इधर मिलता है coaching. And I'm trialing in a few places. अगर वो हो जाता है, then yeah, maybe I'll have a coaching income for. I'm the senior marketing associate for those tax. अगर हो जाता है तो like obviously better रहेगा. Why don't you apply for coach of VLT? Because I think they have CA. CA, like VLT are in good safe hands. What work do you do in BlueStacks? Senior marketing associate. Basically, I'm in charge of reviewing the articles and all from for us perspective. And so, otherwise, keep branding. Thank you, Sahil. BlueStack emulator. Yeah, BlueStacks. Way emulator. Just time out was like well timed as well. Again, from a mental aspect, it's well timed. कोचिंग इंजन स्टडी वाला है, वैलोरेंट वाला कोचिंग. स्टडी वाला मैं पहले किया करता था, वो भी लेजर में फ्री में. मैंने आज तक पैसे नहीं लिए स्टडी वाला कोचिंग देने के. वैलोरेंट में भी मैं आधे लोगों से पैसे नहीं लेता हूँ. ओके, सूडो बाई है. They're looking to charge up towards mid. Good dash. घुस गए. Good cover नीचे mid से. Very good opening pick. Good trade. Nice trade. Beautiful. So ये पूरा सीक्वेंस फास्ट खेलने की वजह से सी फैंसी कितना दिक्कत में आ गई. इट्स एन इजी राउंड. फैंसी को यू पुट अंडर प्रेशर एंड सडनली देन जस्ट नॉट एज गुड. ग्रेट. अगर ब्लू स्टैक एमुलेटर हो तो प्लीज इंप्रूव इट. गेम्स आर मच स्मूथर ऑन गेम लूप. In course regarding marketing and stuff, don't underestimate yourself. Yeah, I don't want to. I want to get into Valorant coaching. I want to get into Valorant. Maybe
someday I can go work for Riot Valve or something in a very good capacity and help improve all these things and learn more about the game and everything myself as well. That is the aim. पिज्जा दिखा रहे भाई, मेरा खान पीछे आके रखा हुआ है मेरा सैंडविच, जो हम जब ग्रुप्स देखेंगे तब बात करते करते खाएंगे. बट या द टाइम आउट के बाद तुरंत दिस फास्ट प्ले आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. पर ये देखने के बाद दे शुड हैव रियलाइज्ड कि यू आर वर्क फ्रॉम होम. या यूज्ड टू प्ले पबजी. ये देखने के बाद दे शुड हैव रियलाइज्ड कि भाई मेरे को, आई बिलीव गॉड स्पीड बाइट और राइट. I would very much love working in all these capacities. Sandwich of what? तो उसके बाद इनको समझना चाहिए था कि मिड एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे दे कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट फैंसी का लैक ऑफ मतलब कमिटमेंट, कभी कभी ओवर कमिटमेंट. स्मोक, सी रॉसी इज टेकिंग माइल्ड कंट्रोल बट फॉल्स बैक. आसरोला, ये वॉल वापस, ये वॉल का मतलब है, सो दिस इज दिस राउंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये राउंड में दे नो कि ये लोग पुश करने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉल, राइट. ये वॉल का मतलब है वो लोग मिड पे कंट्रोल लेने वाले हैं. नॉर्मली जो वॉल किया है इन्होंने, ये इन्होंने 3 राउंड देख लिया है. somehow Acerola gets the kill but Golu trades, मतलब सेम बंदे को नहीं बट somehow gets a trade. Purifier हो गया. Now they're just waiting but ideally they should just push B, which they do. Nice. फ्री का कंट्रोल मिल गया उनको और पीछे इसके रॉसी इज होल्डिंग. वेरी गुड. चल मतलब दिस वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस, राइट. Aim battles me I can't judge because that is not my place to judge. But Kappa immediately takes more control towards this area. Heizi played poorly. He should have waited for his team instead of making a hasty judgment there and trying to go for that peak. Golu is trying to cover back of side. Kappa takes a very good fight. He now knows कि वहाँ पे player है. This fight was not necessary. After this, he should just fall back instead of taking this control. दे प्रेशराइज देम. ठीक है, अब उनको लगता है कि ये एरिया उनके कंट्रोल में है ना. डिफेंडर्स को लगता है ये, अरे यार ये अभी भी ब्लू था. अब उनको लगता है ये एरिया इनके कंट्रोल में है, तो अब कप्पा को डायरेक्ट इधर आ जाना चाहिए. ठीक है, अब उनको ये सब जगह खेलना चाहिए. 1 2 3, बिकॉज उनको पता है कि ये सब जगह. बट सी कैन स्टिल डू टेस्टिंग फॉर नॉट वन. या विल्टी ने लर्न किया जी के मैचेस से, किया ही होगा ना. वीएलटी ने, जी ने, सारे टीम्स ने लर्न किया होगा जी के मतलब मैचेस से. CS for APAC. After that, you can surely never coach Bangladesh for Unity. Maybe they sign CA permanently, dude. I think CA would love to do that. See, I think that was unnecessary. उसके पहले तक बहुत अच्छा था. And this was just absurd. भाई SI कैन ने बहुत ही गंदा मारा है भाई ये. Because ultimately I feel ये 2v2, ये जो 2v3 है, after Golu gets this kill, I'm like round is secure. To be honest, जब मैं ये मैच देख रहा था, I was like, after Golu gets that kill, Hellranger smokes him off. I'm like, गया, this round is secured now. No, but exactly. So there is no cover for Kappa ना इधर. Even if he doesn't know, he is going towards this area. इस एरिया में क्यों जा सकते हो? क्योंकि तुम्हारा ये एरिया तुमने देखा ही नहीं है. ठीक है, तुमको कोई नॉलेज नहीं है इस एरिया का कि है कि नहीं है. ये पूरा एरिया का कोई नॉलेज नहीं है, तो यू कैन नॉट गो. हम सिर्फ मैप में क्या हो रहा है उससे नहीं देख सकते, बिकॉज मैप दूसरे बंदे को नहीं दिख रहा है. हम बस अपने पोजीशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. बिकॉज गोलू और क्या नाम है जो प्लान कर रहा था हमारा, ठीक है, वो दोनों ये सब एरिया में थे. इस एरिया में अंदर जाने का बनता नहीं था, बिकॉज he couldn't, like, there was no escape option, there is no trading option as well for him. Coach entry है, coach entry मतलब when at the moment Kappa doesn't know ना, ढंग से बोला ये this kill changed the round because right now Golu, I am like, the round is secured. It's either that or he holds snowman. He doesn't even have to hold snowman because snowman पे भी
he is going to take an unfavorable fight here 1v1 में, जो कि is not necessary. Now the impetus, see the impet, he has already given up his position कि वो यहाँ पे है after taking the fight with the person here. ठीक है, अब वो वापस इधर नहीं जाके he is falling back, which is good, but he should have fallen back here जहाँ पे ज्यादा कंट्रोल है, वॉल भी है यहाँ पे, so he cannot be killed from this area. हाँ, आप गलत स्ट्रीम पे आए हूँ, उज्जू भाई लाइव नहीं है, क्या हुआ राहुल गेमिंग? व्हाट डू मीन, व्हाट्स द इशू, क्या हो गया, क्या बोल दिया भाई? ठीक है, बट सी कैन स्टिल डू कास्टिंग ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी. आई थिंक ही कैन, ही शुड, क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम? कास्टिंग एंड कोचिंग आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जॉब ना, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अब इधर हिल रेंजर जस्ट इट्स जस्ट अनलकी कि उसका बुलेट खत्म होता है और उसी समय से रोला हियर्स द बुलेट उसका साउंड एंड देन जंप्स ऑन हिम. अनलकी, nobody expects this. ठीक है, after this kill nobody expects yes I can to get this kill, honestly it's absurd. VLT over prediction, I think VLT wins. When I said no, they could have chased him, caught him while falling back, so he was stuck between that or going inside. No. So this was the first option, this is the second option, the third option is this, and the fourth option is just committing again, taking another fight. The third option is the best option, this is the best option. ठीक है, this is the best option out of, because ये option में you have cover, you have disengaging thing, because you have cover of sight, you have cover of teammates, you have cover of the wall here. ठीक है, he just has to fall back to yellow. इसको बस इतना जगह क्लियर करना था. 1 4 and 2 are not viable here. Not here, thank. He did cast yesterday. Yeah, don't you think VLT should bring in Marcel? Some of the maps is good. Depends on them यार. Sandwich खा लो, नहीं खत्म करके. Yeah, I'm of the opinion teams know, like team, वो हैं उनको पता है. Mo2 G immortal cruisers पूछ रहे हैं. What national teams do to improve the game? Why not in India? भाई मेरा एम रूटीन बहुत सिंपल है, वो काम भी करता है, वो सीए को भी पता है, बहुत जिनको पता है, जिनको भी दिया है. इतना एम रूटीन का जरूरत नहीं है कोवैक्स एम लैब्स का. ठीक है जिनका प्रेफरेंस है, मेरे को उतना यूटिलिटी नहीं लगता. एम लैब्स और कोवैक्स का सबसे मेन यूटिलिटी है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ योर इंप्रूवमेंट, नथिंग एल्स. इट इट बेसिकली गिव्स शेप टू व्हाट योर इंप्रूवमेंट इज, मतलब तुमको स्टैटिस्टिकली दिखाता है. वो 36 आई थिंक अब खत्म करना पड़ेगा मेरे को. आपका एम रूटीन बोलो प्लीज. बोलूंगा जल्दी बोलूंगा. थोड़ा और डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये बेस्ट, मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं, कितने जन के अभी तक 14-15 जन को दिए, सबके काम किए हैं. अगेन सेम अल्ट्रा अग्रेसिव सेटअप. इस बार उधर नहीं जाके फ्लैश करके पीछे, वेस्ट ऑफ फ्लैश आई वुड से, जस्ट पुश देम बैक. स्मोक कर दिया, नाइस. So fancy did well here. And now Global have smoked दूसरा एंगल. ये रूटीन में क्या चीज होती है? नाइस, अल्ट यूज किया. दे आर वेटिंग. आई थिंक दे आर मोस्टली वेटिंग बिकॉज ओमेन का अल्ट है. ठीक है, सो ओमेन इधर होके भी अल्ट करके फिर पीछे जा सकते हैं. सो दे आर वेटिंग सब कुछ. अब उसने क्लियर कर लिया, अब रिकॉन के पीछे, नाउ दे विल पुश. ठीक है, नाइस फ्लैश, टेक इन कंट्रोल. फ्लैश अच्छा था वापस. कप्पा ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स हुए. हाइजी गेट्स किल्स, दैट वाज मैसिव. बेवा हेटर के हिट है. पुशिंग टू काइंड ऑफ पिक अप. दिस प्ले गाइस, मैं बता रहा हूँ, हेल रेंजर हैट्स ऑफ भाई. हेल रेंजर
नहीं, ये जो किया ड्यूरिंग दैट मोमेंट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. दे आर पजल्ड, दे आर बैम्बूजल्ड. उनको कितना ग्राउंड कवर करना है तुम सोच रहे हो? ये इधर है, उनको इतना ग्राउंड कवर करना है. हेल रेंजर यहाँ पे प्लान कर रहा है, एस्केरोसी टाइम पे पहुंच जाएगा उसको कवर देने के लिए. भाई खत्म है ये राउंड. आई थॉट दिस राउंड ऑल्सो, आई वाज लाइक ये राउंड तो मिल गया हम लोग को. ओके. नाउ उन्होंने स्पॉट कर लिया रॉसी को, रॉसी ने भी स्पॉट कर लिया. ठीक है, रॉसी डजंट नीड टू गो फॉर द पिक. कोई जरूरत नहीं है, दे हैव टू कम. ठीक है, यहाँ पे पिक लेता है रॉसी. विफ भी नहीं बोलेंगे, ही मतलब वो बंदा हाइड कर गया, टाइमिंग गलत हो गया. हेल रेंजर ट्राई सी, ये यही दिक्कत हो गया यहाँ पे. दिस इज द ओनली, आई थिंक दे वुड हैव वॉन दिस राउंड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हेल रेंजर हैज अ स्पेक्टर. तो आई वुड रिकमेंड, लाइक ऑनेस्टली आई वुड रिकमेंड हेल रेंजर ये सब जगह पे खेल, ये जगह पे खेल सकता था. Now that, like, I would have preferred, but again, heat of the moment, I think it was a very nice try. Very nice try. It's just that Spectre था. अगर, so I'll tell you, अगर Spectre की जगह he had a Phantom, he would have killed this guy. He would have killed this guy. With a Phantom or a Vandal, he kills this guy any day. इमरान जमीन but Kovacs is very good. अरे भाई मैं कब लीव कर दिया था, अभी तक आइसबॉक्स ये और कितना एनालिसिस करेगा. ब्रेकिंग डाउन पूरा मैप टाइम लग जाता है. हेल रेंजर को नीचे के गली से खेलना था, कुछ भी कर सकता था. बट वही है कि यहाँ पे इफ ही हैड अ वैंडल या फैंटम, तब भी ही वुड हैव प्रिवेल्ड आई थिंक. हाय इमस्टार, वेलकम. हेल लुक्स लाइक अनुज. रहेगा थोड़ा अच्छा रहेगा. So this is just unfortunate. दो राउंड लगातार they were on the wrong side of timing or let's say fortune, because normally yes I can should not be able to kill गोलू उस शॉट से. और यहाँ पे हेल रेंजर हैड अ स्पेक्टर इंस्टेड ऑफ, लाइक फैंटम में वैंडल रहता तो मार सकता था. नहीं, खाना तो मेरे को दे दो. क्या बात है. व्हाट्स गोइंग ऑन भाई. हाय मयंक, क्या हाल है. पनिक वाज टू रिप्लाई टू हेल रेंजर ट्वीट. तो भाई रिप्लाई करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार. नाउ ग्लोबल, द होल वर्ल्ड नोज ग्लोबल स्पोर्ट्स गाइस. हेल को स्मॉल टीपी यूज करना था, कर सकते थे. then author also play women instead of Reno Nightbot with the same drop maybe. अब देखो वेरी मेकशिफ्ट बाई है, बहुत ज़्यादा मेकशिफ्ट बाई है. एसके रॉसी के पास बेसिकली हीरो बाई है. दिस इज एसके रॉसी को यहाँ पे कुछ पुल ऑफ करना पड़ेगा. फैंसी यूनाइटेड गियर्ड मोर टुवर्ड्स स्किल्स. थोड़ा मिड पे हरकत दिखाता है, फॉल्स बैक. थोड़ा ए वाले बंदे भी पीछे खेल रहे हैं यहाँ पे फैंसी का. सो सही चल रहा है अभी तक. जैसे ही ये स्पॉट किया, नाउ दिक्कत. नाउ दे विल स्टार्ट पुशिंग. और अभी ग्लोबल के पास टाइम है तुरंत कंट्रोल लेने का, विच दे डू. दिस इज वेरी गुड. एचएसबी ट्वीट देकर नहीं, मुझे नहीं. वेरी गुड. टेक्स एंटायर कंट्रोल. दिस इज गुड. प्लान कर रहे हैं. दिस किल वाज वेरी गुड. इसके बाद पीछे आ गए, 5v4 हो गया. आसरोला पीछे से आ गया, अनफॉर्चुनेटली किल्स हेल रेंजर फ्रॉम देयर. देयर आर टू पीपल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. दूसरे का आई थिंक सो, दूसरे भी हेल रेंजर ने दूसरे भी देखा है क्या? नो, हेल रेंजर डजंट स्पॉट द अदर वन. डिडी यार, एक तो ये क्वालिटी भाई, क्या है ये क्वालिटी गाइस. 1080p में ऐसी क्वालिटी है. और क्या है ये क्वालिटी, व्हाट द फक. जो लिटरली लेफ्ट मिड विद चिंगोटन स्टेप वॉचेस. हाँ, यार नहीं समझ में आ रहा. लेट्स जस्ट अज्यूम कि इनको पता है सिर्फ वो में नहीं है, मतलब नहीं स्किल्स को पता है, कसो ऊपर भी देख रहे. गुड किल फ्रॉम स्किल्स, बट तब तक आसरोला आ जाता है. गुड पिंच. फैंसी प्लेड वेल विद द पिंच. as soon as सोवा उसको अटैक करता है, वो बी से पुश करके द पिंच इट वेल. ट्विच पे देख लो भाई, यूट्यूब कंप्रेशन ट्विच में देख, बेटर क्वालिटी है. अभी ट्विच में वॉर्ड जाके देखना पड़ेगा, वो बहुत लैग करता है वॉर्ड्स. प्रॉब्लम वो है.
Now this Sage जेट तुरंत कंट्रोल ले रहे हैं और डैश करके तुरंत घुसा, कंट्रोल लिया, रिकॉन आया, वाइपर का स्मोक है वहां पे। यहाँ पे ओमेन ने तुरंत ए पुश करके कंट्रोल ले लिया, स्किल्स को मार दिया है, फनल्स देम टुवर्ड्स बी। कापा इज वाचिंग बिहाइंड बट उसके पास स्पाइक है, तो मतलब उसके आसपास ही स्पाइक है, सो नाउ इज द राइट टाइम टू टेक द स्पाइक एंड गो बी। ड्रोन, ही ट्राइज टू ड्रोन, जरूरत नहीं था ये ड्रोन का आई फील, बट इट्स ओके, इट्स स्टिल ओके। डिड यू टच ग्लास? मोटू जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। परफॉर्मेंस कोच ये वो कुछ बकवास, मतलब वो स्पेशलाइजेशन बहुत दूर है इंडिया अभी उस स्पेशलाइजेशन से। टेक इन कंट्रोल बहुत सही। जैसे कैन स्पॉट्स, नाउ दे नो कि दे आर इनसाइड साइड, सो दे हैव इनसाइड साइड कंट्रोल। इधर ये सी, ये गया था, हेल रेंजर वुड हैव कंप्लीटली डाइड इफ एस्केरोसी डिडंट कवर हिम। यू विन दिस राउंड अगेन। ये माइक्रो डिसीजन जो एस्केरोसी का टू कवर हेल रेंजर वाज वेरी गुड। अब इसके वजह से कंट्रोल नहीं किया, एस्केरोसी किल्स हिम, हेल रेंजर कवर्स एस्केरोसी हियर, ब्रिलियंट। हाइजी मार भी देता, कोई बात नहीं, अब हाइजी कुछ और कर नहीं सकता। ही नोस कि बैक ऑफ साइड कंट्रोल है, ही हैज टू वेट फॉर वाइपर। वाइपर आता है, वाइपर डाइज टू हेल रेंजर, वो वहां पे हेल रेंजर विंस द राउंड, बिकॉज अब हाइजी कुछ नहीं कर सकता। सी, वेरी वेल प्लेड बाय ग्लोबल एयर। मैं गांजा पी के आया क्या? कीबोर्ड वॉरियर क्या बोल रहा भाई? डिड यू टच ग्रास? जितने में ज्यादा इंपैक्ट नहीं मिलता है गाइस, मतलब सारा राउंड्स में इंपैक्ट नहीं मिलता है गाइस, परफॉर्मेंस में इंपैक्ट मिलता है। रिजल्ट्स आर अ कॉन्सिक्वेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुम लोग हर एक चीज को रिजल्ट्स में तोलते हो, हर एक चीज रिजल्ट्स में नहीं तोलती है। वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो एक रियल स्टोरी है अमेरिकन फुटबॉल की, ठीक है? आई शो यू गाइस वो रियल स्टोरी मूवी, वो मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है कि देयर इज अ टाउन जिसके मोस्ट प्लेयर्स फ्लाइट में क्रैश होके मर गए, ठीक है? एंड देयर इज अ कोच हु कम्स एंड रीबिल्ड्स एंड ही टेक्स द टीम, जो भी प्लेयर्स हैं जैसे भी हैं गंदे प्लेयर्स हैं, टेक्स द टीम, रीबिल्ड्स देम, finishes the season not last but like they have like some wins under their belt, like 10-11 मैच जीतते हैं टोटल 40 में से। बट वो जो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके बाद वो कुछ छोड़ के चले जाता है, बट दैट टीम गोज ऑन टू विन चैंपियनशिप्स एंड लाइक डोमिनेट फॉर इयर्स। अर्ली स्लो, उनको पता है कि ये लोग पुश कर रहे हैं, पीछे से ही ड्रोन कर दिया इसके रोसी, यहाँ तक कंट्रोल मिल गया इस बार अर्ली, विच इज गुड। इसके रोसी इज पुशिंग, दूसरा स्लो, वेरी गुड। पर इधर स्पॉट हो गया इसके रोसी, ही हैज टू हाइड थोड़ा सा, नाइस विच ही डज। नाउ ही हैज द ऑप, बहुत सही प्लांट हो गया। गोलू इज इन अ सेफर पोजीशन नाउ, इसके रोसी हैज दिस डैश, ही कैन अफोर्ड टू टेक वन फाइट। वेरी नैरो एंगल, ऊपर वाला एंगल टेक्स द फाइट, बट वही है, ये बॉक्स की वजह से ही डाइस, नहीं तो सेफ था। डिसएंगेजिंग, इट्स 4v4, गोलू इज, कप्पा का एंगल इज गुड, गोलू गेट्स ट्रेडेड, वेरी गुड नैनोसोम यूजेज। अब स्किल्स और कप्पा को होल्ड ऑफ करना है जब तक हेल रेंजर आता है, बट वही है कि आई डोंट नो व्हाई। कप्पा का अल्ट कैसे दे यूज, दे विन दिस राउंड बेसिकली, और कुछ नहीं, बिकॉज हेल रेंजर तो वहां पे देवर एक्सपेक्टिंग मर गया था। कप्पा का अल्ट वजह से थे विन दिस राउंड। तेरा नाम देख के मुझे ये जोक नहीं लग रहा। 11-12, वेरी क्रूशियल राउंड। उनको पता है इकोनॉमी खत्म है, इकोनॉमी अभी खत्म है। ग्लोबल को पता है फैंसी की इकोनॉमी खत्म है। नाइफ आता है तो पता है केओ यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है? ड्रोन आया, पता है सोवा यहाँ पे खेल रहा है, सोवा केओ स्पॉट हो गया इनके लिए, है ना? वाइपर अल्ट बी पे है, तो पता है उनको, तीन चीज पता चल गई कि वाइपर बी पे खेल रहा है, केओ सोवा ए पे खेल रहा है, सो दे नाउ नो थ्री थ्री थिंग्स।
स्विच का अटैक कर रहा था उतने में ही बॉट चेम्बर का नहीं पता है, ओमेन का नहीं पता। दे नो केओ सोवा वाइपर का पोजीशंस, ठीक है। दे आर प्लेइंग वेरी वेटरन बिकॉज दे नो कि पुश हो सकता है बिकॉज उनका इकोनॉमी अच्छा नहीं है, ठीक है। स्मोक कर देते हैं इनको, वेरी गुड। चेम्बर स्पॉट्स देम गोइंग ए, आई थिंक ही स्पॉट्स या पिक्सल पिक्सल देखा होगा या नहीं देखा होगा, ठीक है। अब ये ड्रोन कर रहे हैं, रिकॉन में कोई स्पॉट नहीं होता, ये ड्रोन कर रहे हैं, इनको ड्रोन में क्लोज में कुछ नहीं दिखता। दे एंड द ड्रोन लेफ्ट, बिना चेक किए दे एंड द ड्रोन, ये प्रॉब्लम है। सो दे नेवर क्लियर द लेफ्ट साइड। आई थिंक ही डिसेबल्स द ड्रोन हिमसेल्फ, कप्पा डिसेबल्स द ड्रोन हिमसेल्फ, ड्रोन खत्म नहीं हुआ है फिर, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट लेफ्ट चेक नहीं हुआ है, सो दे आर नॉट श्योर। तो अभी उनको बस इतना पता है, ये जो एंगल है इतना एंगल क्लियर है, इस तरफ का कोई पता नहीं है। पता है सोवा के वो खेल रहे हैं, ठीक है। और सोवा का उसके बाद रिकॉन भी आया, तो सोवा अभी भी यहीं पे है। केओ का पता नहीं अब यहाँ पे है या नहीं है, पर शुरुआत में नाइफ जरूर किया था। वाइपर पता है कि इधर है, ठीक है, और कुछ नहीं पता है इनको। सो डिस्पाइट यूजिंग ड्रोन ये सब उनको अभी तक कुछ पता नहीं चला है अबाउट अबाउट द मैप। सी बट वही है कि 40 सेकंड बाकी है, शॉक डार्ट मारते हैं, दोनों शॉक डार्ट यहाँ पे यूज हो गए। इस जी आउट ऑफ द डम या एंड दिस स्मोक 30 सेकंड बाकी है, दिस शुड नॉट। अब ये जो स्मोक होता है इसके थ्रू इनको नहीं जाना चाहिए, इवन दो इट्स फ्लैश्ड, ये स्मोक के थ्रू नहीं जाना चाहिए। दे रन इनटू द स्टैक, इट्स ओवर। दे हैड नो इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम वही था। दिस इज वेयर दे शुड हैव प्रोडेड मिड थोड़ा। मैं बहुत राउंड से बोल रहा था, बट इट्स ओके। स्मोक भी लेफ्ट क्लोज से आया, साउंड भी आया होगा, आ सकता है। दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल। ऑल इन ऑल उनको पता था मिनिमम 2 जन ए हैं, वाइपर 1 जन बी साइड पे, और वाइपर ए साइड बी साइड पे, तो मैक्सिमम 1 जन मिड देख रहा होगा, या और ये वॉल है तो वो लोग सोचे कि एक और जन मिड थोड़ा पुश कर रहा होगा, ठीक है। सो दे नो कि मोस्ट लाइकली इट्स अ 2-2-1 या 1-2-2 बोल लो, अगर लेफ्ट से हम पढ़ते हैं हमेशा, है ना, तो 1-2-2 है। सो दे आर गोइंग अंडर दैट असम्पशन कि वो लोग हैं, एंड ओमेन मोस्ट लाइकली उनको सपोर्ट करने के लिए इधर से स्मोक दे रहा है लेफ्ट से, और चेम्बर मिड खेल रहा है उसके साथ, ऐसा कुछ है उन्होंने ये अज्यूम किया। पर वही है, अगर ड्रोन इधर चेक कर लेता राइट के साथ साथ लेफ्ट भी, या तो ड्रोन खत्म हो गया या ड्रोन बंद हुआ, आई डोंट नो व्हाट बिटवीन द टू जो था, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर ड्रोन लेफ्ट चेक कर लेता तो वो बच जाते, तो ये राउंड जी का था। इवन डिस्पाइट व्हाट दे डिड नॉट टेक मिड कंट्रोल बिकॉज दे वर अज्यूमिंग कि मिड पुश हो सकता है ऐसा, ठीक है। बस ये वॉल का मतलब है कि मिड पुश हो सकता है, वाइपर बी पे है तो इस बार बी जा नहीं सकते, तो बचा यही था, ठीक है, उनके लिए, जी के लिए। एंड दे प्लेड डिसेंट शुरुआत के राउंड में, बस वो ड्रोन ये एंगल चेक किया, ये एंगल नहीं चेक किया। ये एंगल अगर चेक कर लेता, टाइम नहीं था या जो भी था, तो वो बच जाते। तो ऑब्वियसली आई थिंक सो देन वो लोग थोड़ा मिड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते, तो फिर भी 40 सेकंड्स वर लेफ्ट जब ड्रोन खत्म हुआ। आई थिंक 45 सेकंड्स वर लेफ्ट। इफ लेट्स गो बैक, let us look where the drone dies. 47 seconds are left, so I think there is a lot of smoke gap lost them the round. हाँ वो बोल सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ स्मोक गैप नहीं भी रहता तो भी ये राउंड वो हारते, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि फिर भी 3 जन तो एज हमेशा से ही थे, चौथा जन नहीं आया। दे हैव लॉस्ट टू दीज 3 पीपल ओनली जो शुरुआत से ए पे है। स्मोक गैप से राउंड तब हारते जब चेंबर ये छोड़ के चेंबर भी ए आ जाता, 4 जन ये हो जाते, ठीक है, चेंबर ये स्पॉट करके। पर वो स्मोक कैप का फायदा फैंसी ने उठाया नहीं, फैंसी बस 3 जन यहाँ पे रखी, उनको पता है भाई चेंबर ये देख रहा है, ठीक है। चेंबर अगर स्मोक कैप नहीं भी रहता ना, तो चेंबर अपना उसमें वो लगा दिया था उस स्मोक के अंदर, अपना स्लो, तो अगर कोई क्रॉस भी करने की कोशिश करता तो वो स्लो में पकड़ जाता। वाइपर बी पूरा सिक्योर है, ठीक है। अब 2 जगह बचती, अगर ये स्मोक फुल भी रहता तो मैक्सिमम ये देखना पड़ता, तो चेंबर क्या करता, चेंबर फिर ये जगह पे खेलता, चेंबर ये जगह पे खेलता चेंबर, और यहां से ये पड़ता, ये भी खेलने की जरूरत नहीं है यहां पे भी एक स्लो लगा हुआ है, तो चेंबर वापस ये मिड ही खेलता और कुछ नहीं खेलता कि अगर यहां से पुश हो जाए तो। और ये 3 जन ए ही खेलते, 4 जन नहीं होते ए पे, तो ये 3 ही जन ए ने ये राउंड निकाला है। इट्स जस्ट वो ड्रोन नहीं स्पॉट करता लेफ्ट में,
और ओमेन का जो स्मोक है वो अपॉर्चुन टाइम पे वो रीस्मोक करता है यहाँ पे, वो डार्ट करता है बाद में करता है। यस एग्जैक्टली। नहीं क्या करते हैं हम, मैं बोल रहा हूँ ये जो डिसीजन था ये भी ठीक था इनका, डिपेंड्स ऑन ये सब चीज। इट्स जस्ट दैट ये जो रीस्मोक आता है ये बहुत टाइम पे आता है, और जो ड्रोन है उसने ये एंगल क्लियर नहीं किया था, वो टाइम की वजह से कुछ भी चीज की वजह से क्लियर करता तो ये राउंड हम जीत जाते, सिंपल सी बात है। बिकॉज जी आर अंडर द अजम्पशन की 1-2 हो रहा है, जी आर अंडर द अजम्पशन की 1-2 हो रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए मिस्टेक मिस्टेक है कि नहीं है पता नहीं। ये लोग ने मिड पकड़े। बीम इन वाइपर अल्ट के अंदर ड्रोन क्यों नहीं किया? बिकॉज बीम इन वाइपर अल्ट के अंदर ड्रोन करना इज वेरी रिस्की यार। तुमको नहीं पता वो वाइपर किस एंगल पे खेल रहा है, अगर ड्रोन में क्लियर भी कर लिया वो वाइपर वापस ड्रोन से निकल के वापस आ सकता है, मतलब अपने वर्ल्ड से निकल के वापस अल्ट में आ सकता है। वाइपर को बैकअप भी नहीं था, वो उनको नहीं पता ना। मोटो जी, मोटो जी आपको दिख रहा है यहाँ पे वाइपर को बैकअप नहीं था, उनको नहीं दिख रहा है, उनको नहीं पता। हमको अभी दिख रहा है, हम ये बोल सकते हैं। तुमको सिर्फ इस, देखो अगर तुमको सही में एनालिसिस सीखनी है ना, तो तुमको ये चीज सीखना पड़ेगा कि तुमको दोनों के पीओवी से कैसे देखना है। ग्लोबल को ये नहीं दिख रहा है ये एरिया, ग्लोबल को नहीं पता। जो तुमको दिख रहा है ना ये सब ग्लोबल को नहीं दिख रहा है। तुमको ये फॉग ऑफ वॉर, फॉग ऑफ वॉर समझ के चलना पड़ेगा। दिस इज फॉग ऑफ वॉर, दिस इज फॉग ऑफ वॉर, ये नहीं है उनके सामने। उनको नहीं पता। अगर दोनों टीम्स को दिखता जो तुमको दिख रहा है तो फिर तो कहना ही क्या था। कर सकते हैं केजे अल्ट का, आई कैन अग्री, केजे अल्ट कर सकते थे। माई जॉब हियर वाज टू शो यू कि इवन दिस कॉल वाजंट बैड। ये कॉल में दो फैक्टर्स हुए, पहला ओमेन रीस्मोक्स जस्ट इन टाइम यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जी का जो ड्रोन था इट डजंट क्लियर दिस एंगल, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कुछ गलत हुआ। किलजॉय अल्ट का आई कैन अग्री कि किलजॉय अल्ट करके यहाँ पे जा सकते थे, किलजॉय अल्ट यहाँ पे करके जा सकते हैं जैसे पिछली बार किया, बिकॉज दे हैड द अल्ट, और कुछ नहीं उसके अलावा। आई थिंक ये जो तीन मिस्टेक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। केजे अल्ट जो तुम लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही, ठीक है। लेफ्ट ड्रोन चेक नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा गलती नहीं है, इट्स लाइक ओमेन स्मोक्स काउंटर स्मोक्स इन टाइम, ठीक है। ये तीन चीज हुआ। भाई बताए नंबर दे हैड। देखो भाई, देख देख ये देख, ये देख, ये देख क्रूजर, देखो ये तो ये जो तुम बोलते हो ना अनदर लैम्बॉट, यू हैव टू वॉच द मैच प्रॉपरली। अगर ये सब जो तुम बोल रहे हो ये देखो क्या है ये, मिड कंट्रोल। मैं तो बोल रहा हूँ मिड जा सकते थे, पर ये जो गए गलत नहीं था, और यहाँ पे स्मोक के अंदर ही अलार्म डाला है, तुम देखो ढंग से। तो एक वही प्रॉब्लम है गाइस। क्रूजर, इफ यू गाइस आर एक्चुअली वाचिंग माय एनालिसिस यू शुड वॉच मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, तुमको दिखेगा भी, मैंने दिखाया भी है क्रूजर। ये देखो, ये देखो, एक उधर लगा हुआ है, दूसरा लंबट ये रहा चेंबर का। क्या बोल रहे हो यार, कम ऑन, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइस। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू गाइस।